traditional data warehousing, BI, ETL, then moved into big data, then machine learning, cloud, right? Currently I'm with Google. Prior to that I was with Microsoft. Also got a chance to publish a book on data analytics with Google Cloud Platform. Right now I'm one of the APAC member of generative AI Embedded with Google, right? And hence I'm going to maybe give you some more insight, give you some specifics on Gen AI, right? And feel free to ask as much as questions you have. I want that if you're spending maybe 35 or 40 minutes with me, it should not be wasted, right? I always feel that if you are attending my session, you should have few takeaways from my session, right? So feel free to interrupt me, feel free to ask any questions if you have, and I would be very happy to answer it, right? You please stop maybe touching that, right? Again, yeah. Yeah, so you can connect with me on LinkedIn, right? This is my bar code for LinkedIn, right? I'm very much active on LinkedIn, right? And maybe I would be happy to answer any questions, follow-up questions if you have, okay, after this session as well. Okay, so let's quickly get started, right? So our topic for today is what? Demystifying generative AI and unlocking the power of creative intelligence. So one thing which I always call out when I talk about generative AI, at least I do 5 to 7 sessions every day on generative AI, right? If folks ask me and people ask me that, okay, what we can do with generative AI, I always say that it's your creativity. Okay? You bring your creativity and you can do whatever you want with generative AI. Okay, and I mean to it, right? And you will see it in upcoming slide, right? So what is generative AI, right? Or what is LLM? Let's consider what is LLM, right? We have seen the traditional programming, right? We still have C++, Java, right? Python and others, right? What this traditional programming do, right? What you do through the traditional programming is, if you have a cat, right? You give a properties. Basically, you define some rules, right? Which is like cat is an animal, it has 4 legs, 2 ears, etc., right? And based on this rule, it understands your data and give output, right? But if you will give cat, maybe you will give cow image instead of cat, again rule-based engine may not be so accurate. Okay, so rule-based engine may not be so accurate there, right? And hence the wave of neural network came in, right? Which was back in 2012, right? Which was primarily based on AI/ML. I hope I have seen most of the people that, oh, I know AI/ML and others, right? But the AI/ML started back in 2010-12, right? It's not like today, 2020, 30, we are talking about AI/ML. What what we are doing into maybe the neural network, right? We were saying कि अच्छा ये image है, ये बिल्ली है, right? And then we are giving the input and output, and based on that, the model itself was generating the rules. Okay, so but again, you have seen, right? This is a cat, this is not a cat. So all type of data we are feeding, which we call it as a training data, right? Whenever we work, right? So we train the model with input and output, and based on that, model will learn and define that particular, what will say, the images, right? And then it will try to learn and define that rules. But again, there are some corner cases, right, which AI/ML is not able to solve, and hence generative AI, right? What you do to the generative AI? You never say that, okay, is it this image belongs to cat, this image belongs to dog. You say that, okay, go and read this number of books. You have given 1,000 books. आप लोगों को 1,000 बुक पढ़ने में कितना साल लगेगा? कितने साल लगेंगे 1,000 बुक पढ़ने में? 3 to 5 years तो minimum. 3 to 5 years. बट जो हमारे बड़े बड़े मॉडल हैं LLM के, 540 बिलियन पैरामीटर, 580 बिलियन पैरामीटर, आई एम नॉट श्योर अबाउट टर्बो, बट इट्स अगेन अ huge model, right? So it is built on a huge corpus of data, right? So what you do, you just feed that data, and then you ask the questions on top of that data, and it understands the human, right? It can interact with human, and that is what the generative AI is, right? So you have given a piles of book or piles of data to that model, okay? You train that model for infinity time. अभी आजकल सबों को पता होगा GPU TPU की बहुत शॉर्टेज है, right? सबों को GPU TPU में बिजनेस करना है, correct? Everyone thinks that that is a very exciting space. Everywhere there is a shortage of GPU TPU. I hope everyone know what is GPU TPU. Yes, sir. What does TPU means? And GPU? Yes. So in order to run this model, you need extensive compute, right? And hence what you do is you basically give
piles of book and then you ask that, okay, you have learned the property of cat from this book, now tell me what is a cat. And that is what the generative, okay. What we are trying to do with generative model is we are trying to generate. As the name suggests, generative, so we are generating something, right? It could be image, it could be text, it could be anything, right? So let's see. What is LLM now, right? So we have seen what is generative AI, right? But again, it's the similar thing which we talked about, right? So ML algorithm can basically recognize, predict, and generate human thing, right? So it's again a deep learning model. It's nothing different than the machine learning, okay? But what is one difference which makes it completely different from the traditional AI? Anyone? What is one difference which you want to call out, which is completely unique in LLM compared to machine learning? ट्रेडिशनल में हमें मैन्युअली सारा पैरामीटर्स देना पड़ेगा. ट्रेडिशनल में मुझे सारे मैनुअली पैरामीटर देने पड़ते हैं. एनीवन एल्स फ्रॉम द बैक एंड? व्हाट इज वन डिफरेंस? एक डिफरेंस मशीन लर्निंग और एलएलएम के बीच में. लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. इट लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ओके. आरएलएचएफ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ह्यूमन फीडबैक, ओके. व्हाट इज वन यूनिक डिफरेंस व्हिच आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट फ्रॉम यू? LLMs use probabilistic models. आप लोग बहुत आगे जा रहे हैं. आप एलएलएम बना सकते हैं. एनीवन कैन डेवलप एलएलएम ओवर हियर. You can develop machine learning model. So the difference between both of them is LLM cannot be built by a normal human, right? What LLM you get is already a trained model. You never go and create a model from training, testing, deployment. The model which you get is ChatGPT, but it's a LLM model जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो. मशीन लर्निंग मॉडल जब आप जाते हो तो आप क्या करते हो? पहले कुछ रिग्रेशन प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग है, ईडीए है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है, सारी चीजें आप करते हो. यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक एंड पॉइंट मिल रहा है. अगर मॉडल के आउटपुट सही नहीं है तो आप क्या करते हो? कोई नहीं बताया, आरएलएचएफ, थम्स अप, थम्स डाउन, मॉडल रन्स इन द रियल टाइम, बट यू आर नॉट डेवलपिंग अ मॉडल. And hence generative AI is much more easier than the normal traditional AI. वहाँ पर आप पढ़ते हो RMLE, क्या है वो, mean time whatever, right? Confusion matrix, right? All those, बहुत सारे complexity वहाँ पर. यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी definitely you want to track the output, but again it's quite easy because you are not developing the model. Correct? So what you did, right, as a part of pre-trained is you trained onto the large corpus of data, and then the model can basically try to understand from that large language of data and then answers your question. Okay, as simple as that, right? Let me talk a little bit more that why it is different, right? As I said, that it can basically understand your context. राइट? अभी आप जाके बोलते हो मारुति टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ मारुति 800, अभी भी वो भी जाके देता है. करेक्ट? इट विल गिव ऑल द डिटेल्स. तो कहां से आ रही है? इट अंडरस्टैंड्स योर कॉन्टेक्स्ट, ओके, एंड देन जनरेट्स एंड गिव्स यू द आउटपुट. करेक्ट? आप पूछते हो क्या? ओके, आई हैव सीन, राइट, मल्टीपल थिंग्स व्हेन पीपल ट्राई टू सबमिट द असाइनमेंट, राइट? You try to ask the questions, you try to generate the code, multiple things you do, right? So basically what LLM can do is LLM can find the pattern, connection, okay, and try to basically generate the content. It can use for conversation. One of the very important use case in the industry, okay, आज के दिन में जो है वो है customer support center. Correct? अभी आपने पहला सवाल पूछा, tell me about my order 1, 2, 3. Correct? It says that your order is in transit. The second thing you ask is where it is. It will say it is in Indore. Did you given that answer when you are asking the second question? जब आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, have you asked again that tell me where it is of the order 1, 2, 3? No. वो context उसने preserve करके रखा, right? That the first question which you asked was 1, 2, 3 followed by the second question, and that is the power of LLM. अगर आप नॉर्मल NLP के साथ करोगे तो वो चीजें नहीं चलेंगी. I hope everybody followed it. Any questions so far? Happy to answer any question if you have. Anyone on to the back side?
Yes, no? And you can stop me anytime if it is getting bored also. Okay, but yeah, I'm just trying to go into the fundamentals rather than talking about too much hi-fi technology, right? So, you understood what is context. Everybody understood what is the context, right? Everyone? Okay. So let's see now. Generative AI is too hot. Everyone wants to go into generative AI. Why so? I have, at least I see 10 different job roles where the people are asking about prompt engineering. Right? I need a prompt engineer with 10 years of experience. Correct? 10 years. Maybe I'm not sure, Gen AI or maybe ChatGPT is in the world maybe since 1.5 years, right? But if you'll see the job description, you'll see prompt engineer with 10 years of experience. And that's where everyone says that, I need to go and read it because it's so hot that everyone, at least I interact with a lot of people, right? I am a mentor with MIT, with multiple different colleges, with Upgrad and everyone, right? So the first question everyone asks, sir, I want to go into generative AI. Okay, tell me how fast I can transition myself. Okay, and that's where I have put this meme saying that, okay, everyone is in a hurry to go and read about it, right? So let's go a little bit to the journey, right? Okay, let's see what is the journey of LLM so far. Everyone knows ChatGPT? Yes, no? Yes. So, किसको पता नहीं है? And in ChatGPT, T stands for what? Transformer, which was the first model given by Google back in 2017. So Google is called as the father of LLM that way because Google released a paper, people use it and then develop the model, right? So we at Google started 2017. We started with Transformer. Then we have multiple different models, right? Which came T5, Lambda, and others, right? Recently, you will see the models which are primarily used are Palm, Bard, and Palm 2, right? What is Palm? मेडिकल असिस्टेंट नहीं वो मेड पाल है पाल पाथवे आगे सॉरी पाथवे Language model. बट पाल कैसे वो एनीवन नो Bard? You use Bard in day to day? Okay? So PAL is again a type of LLM model, okay, which stands for I think pathway. Sorry? पाथवे लैंग्वेज मॉडल Pathway language model, right? Yeah, PALM, pathway language model. Okay? It's again a family of LLM model which has been built again onto the Lambda and so we have Palm 2 which is right now going on for enterprise, but maybe for open source consumer it's Bard, right? I'm not sure whether you have seen it is again into private preview. Google is also integrated with the Bard. Okay, and you can get the content also generated from google.com. Okay, so this was the journey so far with Google. I just put this slide, maybe one slide for Google specific, where we talk about that what is offered within the Vertex AI with respect to the generative AI. If you will see, as I was saying, right, everything is powered by GPU, TPU. And on top of that, we have Model Garden. What is Model Garden? Anyone have logged in and seen Google Console here? How many have seen the Google Console? Google Cloud Platform Console? Very few people? Okay. आप लोगों ने नहीं दिखा ना? Okay. Okay. So like any other cloud platform, Google also when you will go ahead, you can get a $300 credit and you can create your own account in Google Cloud Platform, and then you can try the tools or services like generative AI, BigQuery, Vertex AI, etc., right, which is primarily onto the data side. So what this slide is going to cover is basically what are the Google offerings from generative AI point of view. So one of the very important thing which is available for you during Vertex AI is Model Garden. Under Model Garden you have 100 plus open source models, right? Llama, or maybe let's talk about Stable Diffusion, multiple different models you will find as a part of open source in Model Garden. On top of that you will see something called the Vertex AI, I will say AI platform. In AI platform, it's a Google first party model.
Can anybody tell me what are the Google first party model name, foundational model name? वर्टेक्स ये तो प्लेटफॉर्म है। LLM की नॉलेज बहुत कम है लोगों की तरफ। गूगल के 2 मॉडल्स के नाम, any LLM models? Sorry? But I'm talking about as of now the LLM model which is given via Vertex AI platform. Text Python, anyone heard? Chat Python, Cody. For code generation it is Cody, right? Duet AI. Correct? Image gen for image generation. Okay, so these are the foundational model which is given by Google, which uses the Vertex AI platform. So if you log into the console, you will be able to see all those models, right? सारे वहाँ पर हैं. And then depending on एक fine tuning, there is a terminology called fine tuning, which is very popular with LLM, right? अभी LLM है तो hallucinate तो करेगा ही, correct? वो तो उसकी behavior है, right? How you can control the hallucination? By feeding more data. By feeding more data, and that is what is called as fine tuning. Right? और ये fine tuning करने के लिए the platform which again we use is Vertex AI. Then we have something called as search and conversation, which is a ready-made service. You don't have to do anything. You just upload the document, search on top of that, and then the last one is nothing but the AI solutions, which is towards we already have document AI. Everyone know what is document AI? It's a API call to convert any physical document into the digital one. True. Correct? अभी हमने डॉक एआई के ऊपर ही समराइजेशन का टास्क लगा दिया है। आपके पास 50 पेज की पीडीएफ हो, आप पीडीएफ डालो और उसके ऊपर खुद से समराइज कर लो। You don't need a separate LLM for that. Correct? So let's see, right? One of the very important thing when we talk about is the prompt. What is prompt, by the way? Anything which you give as the input and One by one, ma'am. It is the input that we give to the model. It is the input which we give to the model. Okay. What else? और कुछ? Set of instruction or input is the same, right? Yeah. So it's the same thing, right? You tell that okay, मेरे लिए खाना बनाओ. Correct? Go and try to search for something, right? So that is what we are talking about. Is nothing but a prompt. Prompt is a take input which you pass to any LLM model. And what is prompt engineering or prompt design? Can you specify it कि क्या करना है exactly? खाने में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तीखा बनाना है? ये वेरी स्पेसिफिक है, राइट? अभी मेरे को खाना बनाना है तो मैं बोल सकता हूँ जा रे खाना बना। वो तो LLM तो बुरा मान जाएगा यार, ये कैसे बोल रहा है, वो नहीं बनाएगा। Okay, and one of the very important property is that you have to be respectful when you are trying to do a prompt engineering. And the confidence, I was surprised to see that the confidence score goes very powerful when you is respectful to LLM. So you say, please go and prepare food for me. tasty food. Okay? So that's where the prompt engineering comes, that art and science of explaining the model into a pure and simplest language so that it can go and generate whatever is required for you. Okay? What are the different types of fine tuning method available? Oh, sorry, prompt design available, prompt tuning. क्या क्या है? कोई को पता है? नहीं? I think these are the 3-4 things. Zero sorts. Zero sorts is like आपने LLM से direct question पूछा. You have not given any background. आपने पूछा, tell me something about Indore, or tell me something about Mahakal or Ujjain, right? You have not given any example. The second one is one shot example. One shot example में आपने बता दिया कि okay, the behavior of this is this. Now you are started asking the question, right? Maybe you have told that okay, cat has 4 legs. Okay, you have given one example. और उसके बाद आप पूछ रहे हो कि चलो बताओ काली बिल्ली को कितने पैर होंगे, पीली बिल्ली को कितने पैर होंगे, right? So all those type of things you get it through the one shot example, right? And what is few shots? Few shots you given multiple different examples, right? आपने 5-6 बता दिए. Generally अगर आप एक बहुत चीजें कॉमन चल रही है NLP to SQL. आप इंग्लिश प्लेन इंग्लिश से SQL में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? ठीक है, आपके पास 50 टेबल हैं. आप चाहिए तो आप ऑटोमेटिकली क्वेरी जनरेट करना चाहते हैं SQL की. आपने बोला टेल मी द सेल्स ऑफ जनवरी मंथ फॉर प्रोडक्ट XYZ.
अब ये तो 3-4 टेबल ज्वाइन करके ग्रुप बाय करके डेट पे फिल्टर लगा के सब कुछ करके लेके आएगा। एलएलएम कर सकता है इतना? कोई ने ट्राई किया है इधर? कर सकता है लेकिन उसको information लेकिन उसके लिए आपको टेबल का स्ट्रक्चर देना पड़ेगा उसको पहले से। करेक्ट, तो यही इसके लिए मैं बोल रहा हूँ फ्यू शॉर्ट्स लर्निंग, जहाँ पर आप थोड़े एग्जांपल्स देके उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करोगे, राइट? एंड दैट इज व्हाट द फ्यू शॉर्ट लर्निंग इज। दिस इज व्हाट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बाय एंड लार्ज, राइट? एट गूगल वी बिलीव ऑन रिस्पांसिबल एआई व्हिच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गार्डन। ठीक है, अगर आप इमेज जिन पे जाके अभी जनरेट करोगे गिव मी अ पिक्चर ऑफ चाइल्ड, इट विल नॉट गिव बिकॉज़ देयर सेफ्टी फिल्टर व्हिच हैज बीन अप्लाइड। यू डोंट, मे बी गूगल डोंट नो कि वो आप इमेज के साथ क्या करोगे, एंड हेंस दोस पिक्चर्स विल नॉट कम, right? So if you see how does it start is, it start with prompt, then there is a principle, responsible AI principle, safety principle, which takes that data and then go to the foundational model, generate the output, do a grounding. Grounding is like the factuality of the data which is getting generated, and again do the citation, take responsible AI filter and response, right? So this is how the complete prompt engineering works. Any questions so far? Any questions so far? So now everyone is prompt engineer now? Yes. Sir, as you said, prompt engineering is like giving respect to the model. So the words like please, give me this, these words are deliberately put in the model, or the model learns it by itself? No, I would say again, I'm not expert what data has been fed when the models has been created, but it's my experience which I have seen that when I have given this type of words, right? Please, maybe some type of respectful word, I have seen the better response coming. Okay, so everyone is prompt engineers now, right? Okay, everyone has broken the prompt, so you understand what is zero shot. What was that? Second one? shot, multiple shot. मल्टीपल नहीं है, फ्यू ही है अभी। अभी मल्टीपल के लिए आपको फाइन ट्यूनिंग में जाना पड़ेगा फिर। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? Okay, so now let's little bit deep dive, right? And switching the gear, let's try to deep dive that how does this LLM work? कोई को पता है ये concept LLM के कैसे काम करते हैं? Anyone know what is embedding? I want to understand, get a response from the back side. पीछे के श्रोता please. नहीं? Embedding? Small chunks of data that we give to the model. Embedding is extracting the semantics from the data. ठीक है? अभी हम कहाँ पर हैं? इंदौर में हैं, and we are into DevFest event. तो इसकी embedding क्या होगी? Location, ठीक है, and event. ठीक है? मैं अभी बहुत ही जल्दी एग्जांपल ले रहा हूँ, right? तो ये दो आपने embedding निकाल ली, which is nothing but a semantic of the data. And what basically LLM does, and this is very important. अगर आप ये concept समझ गए, तो आप जिंदगी भर LLM को नहीं भूल पाओगे, ठीक है? It's my guarantee to you, okay? So if you understood this concept how LLM works, I am making sure that you will never going to forget that, right? So just focus maybe for 3 more minutes, right? So what I have given the example is there is a DevFest event going on in Indore, right? This is a sentence I have given to the prompt. What it does is try to extract the semantics. Semantic is nothing but the information about that sentence. उसने क्या क्लासिफाई किया? उसने सिटी क्लासिफाई की. आई एम टेकिंग अगेन अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है? और उसने एक ये क्लासिफाई कर दिया कि ये इवेंट हो रही है, ठीक है? और उसने दोनों के कुछ स्कोर दे दिए, ठीक है? तो एम्बेडिंग इज नथिंग बट एक्सट्रैक्टिंग द सिमेंटिक एंड गिविंग सम वेक्टर स्कोर टू दैट, राइट? एंड दैट इज वेयर मे बी so maybe what we will do is let's understand what is a vector. Vector has a magnitude and direction, correct? And then what is vector embedding is that it represents maybe any image text with some numbers, ठीक है? Some multi-dimensional number होते हैं, ठीक है? It's not just 2 dimensional. अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल लिए हैं, इवेंट है, सिटी, राइट? बट वो सेंटेंस के हो सकते हैं कि 10 डायमेंशन हो, 10 नंबर्स जनरेट हो, राइट? एंड वो कैसे होते हैं? वो जनरली यहाँ पर एक आपके मूवी की जगह क्या आ जाएंगे? सिटी आ जाएगी, और एक्स एक्सिस पे एक्टिव की जगह इवेंट आ जाएगी, करेक्ट? ये दो आ गए, और उस दोनों के बीच में वो सेंटेंस जो मैंने बनाया था उसकी कोई रेटिंग आ गई. ओके, लेट्स कंसीडर 3. ओके, इंदौर में डेव फेस्ट गूगल का हो रहा है.
right? Let's consider three parameters, three vector over here. One vector is city, another vector is event, third vector is company, which is Google, right? आपने तीनों की embedding की. Embedding is a technique which extracts the semantic and gives some score. Score क्या क्या है? 0.1, 0.002 and 0.3. उस स्कोर को आपने सबसे जो मल्टी डायमेंशनल अगर आप देखोगे, and again I'm just taking the example of 3 dimension. In the real world, it is 10 raised to 26 dimension. ठीक है? So it's huge. आप सोच नहीं सकते उससे भी परे है वो. तो I'm just trying to replicate and give you a small example. Everybody is with me? Yes, no? What is embedding? Embedding is just semantic information, attributes of your source or input. And then with embedding, what you did, you put it onto some graph, right? Which is nothing but a dimensions. You have given the dimensions to that embedding, right? अभी जैसे आपने उस prompt को बोला कि tell me about the event which is happening in Indore. Related to the deployment of Aura DB to cloud, I wanted to understand how much efficient is Aura DB. Okay, So do we have no problem. disaster recovery model? No, that is also still on. One of the regions go down. Okay, so it's good that you should hear that and generate the embedding in the meantime. Okay, so what you did is you embedded, right? You extracted the information which is multi-dimensional. ठीक है? अभी आपने मॉडल को क्या बोला? Tell me detail about the event which is happening in Indore, DevFest, conducted by Google, right? अभी वो क्या करेगा? ये जो तीन उसने सिमेंटिक निकाले, वो जाके पूरे वर्ल्ड में सर्च करेगा कि what is the nearest match. Okay, and that is where you will see what it does is it try to find out what is the nearest match with that, and with respect to that nearest match, it brings and gives you the response. Okay, तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया LLM का, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्टेड है. LLM is nothing but getting the semantics or getting the embeddings, projecting into a vector DB with respect to the nearest and trying to do a vector search and get the response. Clear? सब LLM ज्ञानी हो गए? Yes, sir. Cool. So let's understand this is what maybe the vector similarity match, which basically try to find out how similar two different indexes or two different dimensions are. और उसी से आपकी रिस्पॉन्स आती है, राइट? जब भी आपकी रिजल्ट आती है तो सबसे पहले आप टेम्परेचर, टॉप पी, टॉप ए, टॉप एन वगैरह जो सेट करते हो, all these are based on this particular similarity match, right? And then what you do is you try to find out the relevant result and similar content using the vector search, right? Google search, YouTube and everyone uses this particular methodology in order to find out the nearest match. जब आप YouTube पे जाते हो और एक वीडियो देखते हो, तुरंत दूसरी रिकमेंडेशन आती है, वो कहाँ से आती है? वो इसके थ्रू आती है. And we want to use your news. Clear है? Yes. Can we say the Google search as a prompt engineering? Google search is prompt engineering may not be, it uses the indexing, it uses that, but it may not be prompt because prompt engineering is little bit towards context also. ठीक है? ये जो मैं embedding बता रहा हूँ, embedding and context are little different. ठीक है? Embedding is little different than maybe I would say the context, right? But by and large maybe quite similar. To our speaker और कोई feedback, कोई भी theory जो तो आप पूछ सकते हैं. कोई भी देखो वो भी बोल रहे हैं, आप पूछ ही नहीं रहे हो. उधर से मैसेज कर रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछो, आप पूछ ही नहीं रहे हो. यस प्लीज गो अहेड. हाँ बिल्कुल आ रही है. AI ट्रेनिंग में AI is eating its own tail. It's like generative AI जो अपन generate कर रहे हैं, it's like publishing one thing कर रहे हैं. Okay, तो वो synthetic अपने data होता है. fake से generate उसको कॉपीराइट कैसे करते हैं? like वो errors आ रहे हैं कि like अपन staticity अपन ने वो staticity तो internet से connected. ठीक है, वो internet से वही synthetic data उठा रहा है जो दूसरे AI ने generate किया हुआ है. It's like it's taking its error. तो आप जिसकी बात कर रहे हो, आप
आप कॉपीराइट की बात कर रहे हो या फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहे हो? अगर कॉपीराइट की बात कर रहे हो तो जो आउटपुट जनरेट होते हैं, यू कैन ट्राई टू कंट्रोल दैट, ओके? सो दैट इज वन थिंग. एंड द सेकंड थिंग इज if you are talking about the citation, so there is something called a citation. ठीक है, जब भी आपकी रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, so you can get the reference के वो डेटा कहाँ से जनरेट हो रहा है, and that is what is grounding ठीक है, citation comes into the picture. ठीक है, I will connect with you. I think I am running out of the time. ठीक है, let me finish this. Okay, so this is what the Google use, right? And this is one of the example of embedding, right? So you have the data, you go to and do the embedding model, you generate the vectors, which is nothing but the embedding, and then try to search the similar objects, right? Any questions so far? Let's quickly go. This is one of the very important product, or which is a website you will see if you will scan. It is completely built on vector search. Okay, I request everyone to scan and try it after the session because we are running late. Okay. One of the very dangerous question which everyone have. Okay, पहले वाला. So QR. Done? That. Okay, so one of the questions which everyone have. सबको दिमाग में ये question है? No. No? बिल्कुल सही. क्योंकि this is the difference between the traditional AI and generative AI. अभी भी there are a lot of jobs for traditional AI. Traditional AI can solve a very specific use case, very specific problem, which cannot be solved by generative AI. Right? So consider if you have something like a focus detecting pattern, right? Maybe चोरी होगी नहीं होगी, fraud होगा नहीं होगा, right? Though it can give the generic response by generative AI, but may not be via the traditional AI. May not be via the generative AI. इसलिए in order to detect the fraud, in order to classify the data and others, you still have the traditional AI. But in order to generate the content, we generally use the generative AI piece of it, right? These are the few. Again, everyone asks that okay, what generative AI can do? Generative AI can do four things. It can create, it can summarize, it can automate, and it can discover. Right? And there are multiple different use cases around it. I will not go and talk about in detail. But yes, maybe something around generating the image, generating the description, right? Summarizing the content, right? Summarizing the video, discovery is towards searching for the document, automate is again content extraction and others. Right? So these are the four primary use cases you will see, which is solved by the generative AI. Again, it's a complete list of the use cases. I will not go and talk about that in detail. But I hope everybody is now call themselves like this. Correct? That you are the expert of Gen AI now, right? Cool, I have to rush maybe into the last few slides, but yeah, I hope the session was helpful. Feel free to catch me. I will be here for another half an hour or so. Okay, if you have any question, I will be happy to answer. If I am not able to answer, ping me on LinkedIn. I will be happy to answer on that chat group or maybe on LinkedIn. Yes, I can take two questions. Yes. Sir, can you please differ Google dorking and prompt engineering? Google? Dorking and prompt engineering. Dorking. Dorking, I am not sure. Maybe Sunil Michael will join if he has some idea, I'm not sure. I have not heard about this word. King. सर इतना स्पेसिफाई जब हम गूगल पे सर्च करते हैं किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर अमाउंट में डेटा Any other questions? I think there was one question. I will connect with you maybe in the back end. You had some question, right? I will connect with you. Yes. Do you see LLM to grow so well that they write their own code themselves? नहीं फिर से बोलिए. Do you think that LLMs will grow so well that they will be able to write their own code themselves? Definitely it will happen. Definitely it will going to happen. ये तो अभी एक साल में स्टार्ट हुई, एक साल में दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है. अभी तो दुनिया बाकी है पूरी. पता नहीं क्या होगा. I don't know what would be the technology, what technology is going to do. But at least it is one of the very powerful, very unique technology. Lot of potential, lot of power. See, LLM is going to grow very well. It's going to be like human-like very much. So, are we going to have any regulations imposed by Yes, government? yes, definitely. They are. Maybe I'm not sure. अभी government of India ने भी कुछ data privacy laws और ये सब लाए हैं. And US is also bought something around the AI security, AI responsible AI principle. UK is also working on that. Definitely there would be certain regulations. नहीं तो यार ये तो कुछ से कुछ चली जाएगी दुनिया.
Yes. So like you said that it basically works on the data analytics like embedded information. So when you are giving the chunks of information to the LLM, then what does the difference make between the generative AI and LLM is a model and generative AI is a concept you can say. So in order to generate the content, you use LLM model. LLM is a model, machine learning model, large language model. You may not say front end, but generative AI is a technique, okay, which is based on top of LLM. Generative AI मतलब क्या हुआ? Generate कर देते हैं, right? और generate कहाँ से करोगे आप? LLM right? So it's, I would say LLM is the foundation, generative AI is power. Cool. So feel free to connect with me. This is again my LinkedIn barcode. Thank you very much. I took a lot of time. Apologies for that. But I hope the session was helpful. Feel free to connect with me outside, anywhere, maybe wherever you catch me. Happy to help. Thank you. Okay, folks, so Murari will be here with us in the expert lounge. If anyone has any questions or you want to connect with him, you can go to the expert lounge and you can connect with him directly on a one-on-one. So thank you so much, Murari, for busting the myth. And also, we have a token of gratitude for you. Murari, can we have you on stage, please? So we will call Akhil to present a token of appreciation from GDG Indore. Let's have a round of applause for. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you sir for clearing my misconception. मैं तो अगले साल अपना जेनेटिव एआई लॉन्च करने वाला था, पर अब मुझे बहुत पैसा लगेगा ये मुझे पता चला. Moving onwards, किसी को आइडिया है नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई ये कैसे रिकमेंड करते हैं? Anyone? We have those recommendation wala cheez, you know, personalized recommendations, customize yourself. So now to hoga, we have Spotify users here, right? गाने सुनते हो? What is your favorite song? Let's say. कोई common answer? यार अभी कौन सा चल रहा है? हमारे साथ भी मोए है. You know worries, technical glitches चलते रहते हैं. That's what happens in DevFest, right? Developers specialist पता होना चाहिए. 2-3 मोए मोमेंट तो होते हैं, ठीक है? So coming back on track. So as we know कि we have personalized recommendations, customizations. So ये सब होता कैसे है? Anybody wants to take upon that? Keyword-based results. Keyword-based results. Like people with similar interests, like उसने ये song सुना था, उसके बाद next loop में उसने ये किया. Yeah, I mean clustering of the data points. Yeah. So this all comes in a big neural networking of a big LLM model. Exactly. It is a part of generative AI, and we have someone here, a brilliant mind, to explain us more about all this. Okay. मुझे लगा बहुत पढ़ने वाला है. मेरा टाइम अभी खत्म हुआ, आपने पहले बता दिया मेरे को. No, you were so much informative. हमें लगा बस वो चल रहा है. और अगर आप नहीं रोकते ना, तो I think हमें 1-2 घंटा और लगता आपके सेशन में. Because we had so many questions. Okay, but feel free to connect with Murari in the expert lounge. Okay. So, like we have very experienced speakers with us. So ऐसे ज्ञान का सागर है, जितना मिलता है ऐसे लेते जाना. Okay. So moving forward, we have our next speaker, Mr. Sunil Kumar Chanbahadur. Now, what I would like to share is, when I was having a conversation with him for the first time, so I had another speaker with me, Roman Irani. If you know the keynote speaker, right? Yeah. So I was asking him about his introduction, and he said like, if you want to know about Sunil, just go to Bard and search for his name. Bard will give you something good about it. So we have a very modest speaker with us, who is an AI ML specialist and a customer engineer as well. So
Let's give a big round of applause and welcome our amazing tech advisor. Hey, hi everyone. Good afternoon. Namaste. Namaste. थोड़ा एनर्जी कम लग रहा है. Namaste. एक बंदा है जिसके पास अभी भी एनर्जी है. फिर से बोले नमस्ते. Namaste. थोड़ा फिल्में भी कर देते, थोड़ा इंटरेस्टिंग. क्या कभी तुमने मॉडल को ट्रेन किया? अरे रिस्पॉन्ड करो यार. अरे जोर से बोलो यार. कभी डिप्लॉय किया? अब बताओ कैसे किया. I'm just joking. So whole thing, my session is around overview of generative AI and Vertex AI. Why Vertex AI? Because that is the unified platform from Google where you can create your model, deploy a model from after that. So what I will be covering here is what are different needs of MLOps perspective, why Vertex AI, and why Google has chosen to use Vertex AI platform for their generative AI offering, to provide that so that you can use or anyone can basically use it. So this session will be completely around that. So time over हो गया अभी. So I think many of you have already worked on the AI/ML applications. So I don't have to show this list. Okay, these are the different applications that you can use by AI/ML. So since everyone said that they have trained the model and deployed it, so I assume one of these use cases or some of the use cases which is not listed here, you might have worked on it. But when you have worked on it, I think there are one of these three approaches you might have taken. One is either you have used a pre-existing APIs, directly use it, either it's an API or a model that you deploy to build your application. In some cases, you might have custom trained or maybe do the transfer learning on top of those models so that it's customized for your use case. And maybe, I'm not sure whether someone has used and created the model from scratch, a custom model for their use case. That is the third way, right? In all the cases, I think this, if you want to build any cloud AI or any AI application, these are the three approaches that normally we take. Right. So, let's, as I mentioned, this topic will be more around MLOps. So, anyone has seen this picture before? If not, if you have created any ML code, that is just a part of the puzzle that we are going to solve, or you have solved while creating that AI application. This is the complete picture that is like when you want to take this model to production. Right from data collection, data management, exploration, when you train the model, feature engineering, when you deploy that model, how you can scale it, what are different monitoring aspects that you want to take. Because when you deploy the model, that's not it, right? You have to monitor whether that model is performing better in the production or that is basically overfitted on the training data set itself. The real world that model is exposed to is completely different from the training data, then there is no point in deploying that in production, right? So this is what we are trying to solve because as per the IDC, only 36% of model that's being trained in enterprise hits production because of all this complexity. Only 36% of model that's get trained. So that's as per the survey. Numbers might vary. But whole idea of presenting this number is yes, as an ML engineer, if you are creating any particular model or training a model or creating an application, it's just a part of it that you have trained the model. You have to look into the larger picture, how you want to deploy into production, how you want to scale it, what will happen if you collect the new data in production, how you basically do the continuous training so that your model is continuously updated and improved. Because you cannot rely on past data and historic data saying that, okay, my model works on this data and I'm good. Because every time, as we are seeing with AI revolution, the kind of application that we are dealing with, the kind of way we interact with the applications and model, the approach is changing, the interaction is changing, that's the way the data is also changing, so you have to change the model as well. So what is MLOps?
MLOps is nothing but basically you want to streamline the complete pipeline, starting from the data set collection, mainly to deployment and monitoring, everything as part and parcel of it, which you want to streamline and automate. So it can be a model creation or maybe a system ops level where you want to deploy that model, train that model, and use that model. Right? So anyone before worked on MLOps or DevOps? Can you raise some hands? Okay. Okay. How about CI/CD pipelines? Most of you might have used it. Okay. So this is basically extension of DevOps, but specifically for machine learning. Since we are talking about machine learning, obviously that kind of integrations or the things that is required as part of the operations and developer level, I think both the things will change. So there are different MLOps maturity level. What is maturity framework is how you define at what level you are in that MLOps journey. So there are 3 levels I think we can categorize. High level, I think you can then debate on that part as well, but there is level 0, level 1 and level 2. At high level, if I want to classify and define the MLOps maturity levels, level 0 is everything is manual. You are manually collecting your data, training it, then you have trained model, you manually package it, deploy it, or give it to someone to deploy it, then you are monitoring it for some time. So all these steps that is involved in ML creation, ML model creation or deployment is done manually. In level 1, you have automated the ML training pipeline. Maybe you have written a script which do all the pre-processing of the data. Pre-processing करके फिर उसका model training कर लिया, evaluate कर लिया, and you are good to go. Okay, my model is now trained. Let's share with the production team to deploy in a production, right? But that part is not automated. So that's level 1. Level 2 is where you have integrated everything, right from CI/CD pipeline, where any data scientist, if he makes any changes in the code and commits that in the GitHub, that will trigger a build, which internally will trigger a training pipeline. And the training pipeline will handle all the data processing, training, evaluation. Once it is evaluated, it even create a container and deploy in production and have a monitoring setup with the alerts that you have already defined. So we'll look into that complete architecture, how that architecture basically evolves and revolves around that. So as I was mentioning, right, if you can see, I think data and model management, I think that's combined, but you start with the data, you then do the ML development. It can be a Jupyter notebook, it can be a Python notebook, it can be any IDE tool that you're using. You have done hyperparameter tuning. Everyone knows hyperparameter tuning. That's the complex part in ML. Or I will say traditional ML, not the Gen AI. Am I audible in it? Am I audible now? Sorry, I didn't realize that. Okay, so you have to do hyperparameter tuning. You do all the pre-processing. Obviously, the model selection. Model selection also varies based on your application or the use case that you are building. If you want to deploy at the edge, maybe at embedded, the choice of model will change. If you are deploying at the large data center, the choice of model might change. The latency and throughput of the model also impact the selection of the model. So you have to basically, as a data scientist or ML engineer, you have to go through different variations.
So tune that model and basically ultimately give you directly the endpoint and the evaluation results, so that you can decide, okay, whether this model works for me or not. You don't have to worry about anything. Everything is automated as part of the organ. Then we have a generative AI. I think Murari has already covered different part of a generative AI offering that Google has, so I won't get into detail. But in that also we have a similar kind of offering. It's basically as a service which you can use, directly do the prompt training. You can directly integrate with the Vertex AI SDK in Python. If you want to directly use that as an API, you can save your prompt and directly use that as an API. Because at the end of the day, that is a managed service. You don't have to worry about any infra setup or anything from the foundation model perspective. Obviously, there is a model garden. We'll also look into that, how you can use the model garden. I have a demo video of that as well. Let's say you want to create your right from start, you can get into the coding part instead of worrying about the infra or the library setup. So, and it has a tighter integration with all the data services that we have. So, like cloud storage. In cloud storage, what you will store is images, text file, or video if you are processing it. Or if you are using a LiDAR data, maybe point cloud data. Have you worked on it? Anyone has worked on LiDAR or radar data? Yeah? Okay. So you can relate, right? There's a point cloud data. Point cloud data in radar basically, or LiDAR, it's basically create a point mapping of the environment in a 3D layout, which is called point cloud data. So even that basically has to be stored in the Google Cloud Storage so that you can ingest in the model. Then if you have structured data, we have BigQuery. If you are dealing with big data for ML and analytics, you will be running Spark jobs. So we have tighter integration with that so that you don't have to worry about how I integrate my data or bring my data while doing that experimentation. And once you've done that, you can track your experimentation, deploy a continuous training. Once training is done, deploy that as an endpoint. And endpoint perspective, sorry. So endpoint perspective, there are two different means that we'll see. As an endpoint, currently Vertex AI provide two approaches. One is online prediction. So online prediction, as name suggests, it will be up and running 24/7, so that you can query, it can be synced or async request based on your requirement. And there is a batch processing. So if your model has to be run maybe as daily basis or a weekly basis or bi-weekly basis, then you can deploy that as a batch prediction, so that only during that particular time that instance will be up and running. Post that it will be bring down, so that there is no cost charge for that particular service. And there are other services like Vertex AI pipelines. So pipeline basically helps you streamline the complete MLOps workflow. So have anyone worked on Qflow? TensorFlow extended? So, so maybe since a lot of people have not worked on it, maybe pipeline, I have a diagram as well. So pipeline is, you can consider like a sequence of tasks that you want to perform while doing or automating that particular workflow. Like you want to start with the pre-processing part. डाटा प्री प्रोसेसिंग हो गया, अभी क्या करेंगे, इसको देखेंगे, वैलिडेट करेंगे, मॉडल ट्रेन करते हैं, फिर मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, फिर you have a golden data set, you want to validate on that data set as well, whether the test data set is working fine or not. Then you want to deploy it and then monitor it. So every stage, if one stage fails, then you have to stop there, right?
So that can be automated by a pipeline. There are different means. So Kubeflow is basically used when you deploy or use Kubernetes environment. And if you want to set up the pipeline, then there is a library called Kubeflow. In Vertex AI, there is Vertex AI pipelines. Either you are using Kubeflow or Vertex AI pipeline. I think both are supported as part of this platform. So we already, as we mentioned, Vertex AI supports a lot of pre-trained models, visual language, conversation, structured data. You can directly start using that pre-trained models based on your application and use case. If that use case is getting solved by pre-trained model, nothing like that. You don't have to do the custom training and do the heavy lifting later. So whether you are using a pre-trained model or maybe transfer learning any existing model or creating your own custom model, in Vertex AI, at the end of the day, it gets deployed as a Vertex AI endpoint. So Vertex AI endpoint is basically any REST endpoint that you can basically call so that you can take that inference results. And that endpoint can be online prediction or batch prediction. So you can decide, but at the end of the day, it gets deployed as an endpoint. I'm just highlighting it here because we are going to see the same thing, like this is a traditional AI, the same thing is getting followed in generative AI. Generative AI is, I think it's buzzword, but it's part and parcel, still an AI, right? It's AI ML only. You need a model evaluation, you need a training data, you need a evaluation data, you will deploy it as an endpoint. So all those ML ops related things that we are discussing here will be applicable even in the generative AI case. So maybe post that we'll also look into the aspect of how ML ops now operate in generative AI case. And that's the reason at the end of the day it also gets deployed as an endpoint. So this is a pipeline, as we were discussing, right? You start with the extraction of data, validate, prepare, and whatever. So it's not that you have to create one pipeline only. So you use case right? You need a human in loop maybe to validate whether it's getting processed right or not. Maybe कुछ data deviate हो गया, drift हो गया, or data itself structure has changed. So आपका pre-processing logic that you are trying to write, right, it has changed. So what you can do is you can divide this in 3 steps also. One is data preparation, then there will be a human in loop who will validate, and then maybe you then train the model, generate the evaluation results. So how does serverless training work? Serverless training. Oh, sorry. Serverless training is like you can define your instance or the accelerator type that you want. Based on the accelerator type, it will automatically deploy the instance in the background with all the system dependency for that model to particularly train and trigger the training cycle. How does that do without using a cloud instance? Because it's No, serverless. at the end of the day, see, it's managed. Anything basically runs on an instance. Only thing is that is orchestrated from the user perspective. So you don't have to worry about how it's getting set up, what instance is getting set up. What at the end of the day you want for quicker GTM, go to market, is offload that to someone else. And that's what this managed service basically does. So cloud, maybe jokingly I can say cloud is nothing but you are running your application in someone else's desktop. So in that particular case also, you can orchestrate and then deploy. It can be like you are using GKE, then it can be a Kubernetes engine. So you directly deploy pods instead of worrying about Kubernetes. In this case, everything is basically, you don't even have to worry about the cluster creation. Everything is completely managed. So let's take an example of the MLOps journey from how it starts. So from the Vertex AI, obviously I'm showcasing here all the Vertex AI services, but same things apply for any MLOps, whatever service or open source model that you want to use. So you start with your ML data, which is in the center. In Vertex AI, we have Vertex data where you can store it. Yeah, it can be a data storage platform as well. Then you use this experimental development, which is Workbench, Colab Enterprise, Jupyter Notebooks, Python libraries to build your model. Then you check in your code in a code repository.
which will trigger the CI/CD pipeline to trigger maybe a container. We containerize nowadays, right? So that everyone is aware of the containers, right? Is there anyone who has not worked till now on containers? Okay, good. So I don't have to get into that. So since it basically offload the complete system dependency and package it within the container, so it will create a container and store in the container registry where you can version control all those containers that get created. Then again the Vertex AI pipeline hits and it starts doing the training, evaluation part, and you can trigger that automated pipelines. And then once model gets trained and evaluated, we store it in a model registry. So this is not a model garden, this is a model registry, more like a repository where you can version control your model and track all the different versions of the model and store it in one place. And for deployment, again, for prediction endpoint, you will create one container which has different endpoints, different requirements of the services. And then you will use Vertex monitoring services to monitor it. One cool thing in Vertex monitoring services, you can define the drift or the threshold of the drift from the actual model performance perspective. Let's say my model has to perform with 0.9 accuracy, right? And then I set a threshold max, like, okay, it should go as low as 0.85 in production. I'm okay with it. I set a threshold of 0.85. I can set an alert. So at any instance of any data, which is basically where the model is exposed to, it hits below that 0.85 threshold. It will create an alert. It can be in form of an email or some other means that you can select, so that you can now take a corrective action. So corrective action means maybe some data has changed, you want to integrate that or include that in your continuous training so that the model can accommodate to it well and good. Let's say your model is nowhere near to that what's being exposed to in production. Then you have to go back to the change clip where start with the collab and workload workbench and restart, okay, what went wrong in your model architecture or hyperparameters or model selection which needs to be corrected. So all those decisions can be taken, and this is how the complete CI/CD or MLOps pipeline will work. Any questions here? या कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो गया और बोरिंग हो रहा है? नहीं हो गया तो बता थोड़ा. You can pace it out accordingly. Everyone is with me, right? Yes. So now into the GenAI portfolio, right? So I think similar image we have seen in Murari's slide. Right? So we have solution, search, conversation. Everything is built on the Google Cloud infrastructure, GPU, TPU powered. So these are all the foundation models that are provided by the Google Cloud. So we have PaLM model, which is text Bison, text decode. All are basically based on the level size, the complexity of the model. We have chat model, we have text to image, embeddings, speech to text, code generation. But main point is whether you are using Model Garden or our foundation model, it is being powered by the MLOps. And the same MLOps that we have discussed earlier, the Vertex AI managed service. So all those pipelines that we have created or generated, same is applied here. So when you are tuning the model, it will basically trigger the Vertex AI pipeline to do the data pre-processing, training, then evaluation, and then deployment as the endpoint. So same thing applies here as well in the generative AI. And that's why Vertex generative AI on Vertex AI. So this is how the MLOps prediction or the generative AI works. So you have this prompt tuning part where you can prompt tune or directly use it out of the box. All those empathy, tuning, deployment, data part is being orchestrated. Orchestrated means this is being managed. So you don't have to worry about how I want to deploy it. So what at the end of the day, if you want to even tune the model or generative AI model, you just have to provide the data set, define the number of iterations that has to run. That's it. It will automatically trigger the Vertex AI pipeline that we have discussed earlier and create a model, tune that model and deploy it as an endpoint.
So let's take a video. It will take some time. So this is a tuning pipeline that gets triggered when you tune a text pricing model. So this is a tuning graph. It validates, then tune the graph. There is a matrix, TensorFlow matrix that gets generated. We have a same model which gets finally deployed. And if you look at the tuning part, what's happening is you prepare the data set. You convert it into JSON to TensorFlow. Then you compose the parameter, tune the model, and then generate the same model and the TensorFlow matrix. And that those two metrics are basically used either as a deployment, and at the end of the day, it gets deployed as a. So, what's being handled or basically done as part of the orchestration is whatever we have discussed is being automated here, and it gets triggered automatically and offloaded as a managed service without you worrying about how basically it gets tuned, what all things I need to basically handle at the back end, how I should basically tune that model, what are the evaluation criteria. Anyone knows here, okay, how we can evaluate generative AI? What are means to evaluate generative AI? For traditional model, we have confusion methods, we have F1, we have accuracy. What about the generative AI? Discriminators. Discriminators. Okay. How you compare that in the discriminator part? So let's say generate a summary, how you generate okay, whether it's correct or not. Based on pre-trained models like. Okay. Go ahead. No, go ahead. Can be right. I'm not sure about that. I recently studied about GAN. Yeah. Okay. In that method is used like generator and discriminator. Right. Based on that, I answer. Okay. Yeah, similar kind of approach can be taken when you want to evaluate two different models. Let's say you have a pre-trained model which you are using with the prompt area, and you are tuning a new model, right? So you want to compare both the models and evaluate whether your tuned model is better than the pre-trained model. And based on that, the generator will repeat it. Yeah, so something like that. Maybe we'll come to that. But any other suggestions or idea how we can evaluate generative AI models? Okay, we'll come to that. Okay, so now there is a model garden we have seen, right, which provides option for all the foundation models, then open source model, third party model that can be used. And the reason that it's called model garden because it is backed by Vertex AI analogs. So even if there is an open source model, you don't have to basically set up the infra, do all the setup and heavy lifting. Even for deployment perspective scaling, it is basically offloaded and basically integrated as part of this garden. That's the reason it's called model garden, not a model repository. So for example, we are taking here this stable diffusion proof, which is available in model garden. And when you visit the site, you get two options. One is deploy and other is open a Golang. When you deploy, it will deploy as an endpoint, which can be auto scale based on the CPU threshold that you are setting or a GPU threshold or GPU usage. These are two parameters that is being used to auto scale. So you don't have to worry about if you want to use the pre-trained model as well. If you want to use a Colab and let's say you want to add your own custom operations, maybe data pre-processing, post-processing layers, then you can open the Colab Enterprise. This will be something similar kind of interface where it will load it as the complete Jupyter notebook. Same structure, right? Then you can do the magic that you want to do on top of this pre-trained model to create your own custom versions. Or you can download it and then use it, integrate with your own ideas. But what basically these two things, both at the generative AI as well as model garden is giving you is quicker GTM. Because of the competitive environment, what everyone wants is to release new features quickly. You don't have to worry about the infra part. You don't have to worry about how to scale it. That all the things can be offloaded to these managed services. And you can focus primarily on your model, your application, your feature development, so that you can take that to production as soon as possible. So quicker GTM is the key when you are using those managed services.
So these are some evaluation techniques that can be used. So there is automatic metrics. So obviously not all the use cases that we are using in generative AI like generative AI. We are using it for classification. We are also using it for translations. So we can use the traditional matrices that we use in classifications, blue scoring, translation, right? And everyone aware of the blue score, right? Bilingual evaluation and understudy. I think that's the matrix that basically used when you translate any language or do the translation part. So for such use cases, you can use those existing metrics of AI/ML, and you can create your own golden test dataset and then run on the generative AI and see that, okay, how well your model has performed here. Auto SNS, I think similar to discriminator part. You have model A, model B. Model A can be, let's say, a pre-trained model which you want to customize using the prompt tuning. It didn't work for you. Then you did a custom training or fine tuning. You created a model B. And then using the same golden training data set, you can evaluate both the models and see whether your tuned model is performing better than the pre-trained model or not. If it's not performing, then either your training data is biased, it's not covering the diverse set of the use cases that, or the data set that it should cover for this particular use case, or something is missing. Right? Third thing is safety bias. Obviously the bias is important to identify because of the responsible AI bit. You don't want your model to be biased, either from the gender ID perspective or any aspect, right? So using those safety bias, you can guardrail your model, evaluate your model on the bias perspective as well. So those are few approaches that can be used for the generative AI evaluation perspective. Because there is no defined rules like FL score, confusion matrix in generative AI. Because it's difficult to comprehend the ideation part, the custom writing part, how the image is getting generated. So it is difficult to conceptualize and come to a common metrics to compare the idea that gets generated from model A to model B. So, but still, we are working on that, but these are the means that people can use to evaluate their generative AI models. So, those are few things that I wanted to cover today. Basically wants to give you a picture of, okay, how generative AI is being integrated with the Vertex AI, to give that the MLOps pipeline integrated with it, so that anyone who is trying to use those generative AI models, either open source or foundation model, can quickly build on top of it without worrying about the infra part, even when they want to custom tune them. That's why generative AI on Vertex. Any questions? क्या हो ज़्यादा बोरिंग सेशन था क्या? या कुछ ज़्यादा ही वर्ड हो सके? क्या? Any questions? Any? Yes, sir. What are the good resources for Vertex AI and generative AI as a student? From where we have to start? Okay, so there is a good GitHub links that are available. So there are sample applications or the codes available for Vertex AI samples, you can search. And as well as generative AI perspective, we have a Git repo where we have added a lot of examples, right from prompt engineering, how you can integrate with the line chain. Vertex AI is also supported now in the line chain, so how you can use that. How you can use the custom embedding approach when you are doing the documentation based Q&A. Because this out-of-the-box solution, I'm not sure whether you are aware of the generative Vertex search and conversation, where you can upload some PDF and it will automatically ingest that data and perform a Q&A on top of it. That's the out-of-box solution. Right? But if you want to create your own custom one, what you have to do? You have to chunk those documents. So you have to chunk those documents into small bits, which fits into that prompt size or context size. Generate the embedding. Based on the query, you search that vector space for those embeddings and find out the similarity results, and then use LLM to comprehend and contextualize the answer in the format in which question has been asked. So that's the custom approach. So how you can build that custom code, those examples are also. If I have to explain
Vertex AI to one of my friend who does not know programming, how I explain it? Okay, if anyone does not know programming language and you want to explain Vertex AI, right, that's the question. So, in the layman perspective, I will say, okay, if you want to build, it's basically a platform or service which you can use to create your own AI services. So, whatever things, Cloud or like yeah, it's based on the cloud, but everything, anything that's required for your AI ML service creation is part and parcel of that Vertex AI. Right from dataset to monitoring. if someone wants to build projects on the Vertex AI, so what are subscription charges or something like that, or is it free? Or if it's free, for how much time it is free? So I think for students, as Murari mentioned, there are $300 credit. Vertex AI, I think based on the services that you are using, it gets charged. Obviously, you are using accelerator and GPU, then it's very likely that you will consume the $300. But it depends on the use case that you are using, what services you are using, and for how much time you are using. But if you are building any AI application and you don't want to you want to just focus on your code, then that's a good platform to get started with, which basically orchestrate anything that's behind that code that goes right. So from setup, infra setup, library setup, how you can create the pipeline, everything can be automated by even the UI tools are available, or if you are comfortable with Python SDKs or Java libraries, we have Vertex AI SDK supported on, I think, Python, Java, Node as well. So you pick and choose your programming language, use those SDKs to build that complete end-to-end pipelines. Those are few of those. But it's just refer to those GitHub. I don't have that handy in the slide, but just search for Vertex AI samples from GCP and generative AI Git link from GCP. I think those two are good reference point to get started. Sorry. Any questions? No? Okay. Sorry. Can we have a big round? So, sir has taught us a lot about pipelines, step-by-step process और बहुत कुछ है. किसी को डर लग गया है? Feel free. किसी को मजा आया? सीखने को मिला? So, we have something to share with you. But before that, let's welcome Sunil on board again to share a memento. We would like to invite Darshan for our gratitude. मैंने सुना कि मैंने डरा दिया, ऐसा लगा. सच में डरा दिया क्या मैंने? एक दिन कबूल किया भाई. अवेयर कर दिया सर. नहीं, yeah, because see, it's not just AI. That's the reason when you look into any AI profile, right? If you go for a job, they ask for Kubernetes expertise, whether you have worked on that, because how you can orchestrate, scale that, that's also important. Obviously, if you are working on the embedded part, that's different, but in that case, I think distillation of the model, quantization, how you can tune that model to fit, maybe instead of operating on float 32, how you can make it run on 8, that's the quantization part. So that basically drastically reduces the memory size. But those are few things and techniques that you have to learn, either by the learning phase. If you can learn that, I think well and good. Otherwise, during the job part, I think that has to be done so that you can move that workload to production. Darshan, can we have a huge round of applause, please? Thank you. Sorry, We are here to learn और I hope सबको बहुत मजा आया, थोड़ा ज़्यादा aware हो गए लोग, okay? So if you want to contact Sunil or if you have any questions, so Sunil will be there in the expert lounge. You can go, you can connect with him on a one-on-one and clear up your queries. Before moving forward, we have an announcement. So we have cybersecurity study jams by Google. You can scan this QR code. I hope it's visible, right? It's not visible?
Okay, so we will share this QR code if it's not visible. जिनके लिए है, they can scan it from here. Google will be providing a 100% scholarship for students to apply for these. So this will be a cybersecurity certification for everyone. Okay, so do scan it, know more about it, and if anyone has any queries or if anybody wants the QR after the event, we'll be there for you. Okay, so we can move on with it. And if you have any doubt regarding this, you can always go to expert launch and commit launch to solve it out. Okay, moving on. किसने सुपरमैन का नाम सुना है? सुपरमैन यार, कहाँ रहता है वो? जगह का नाम क्या था? अरे सुपरमैन का रियल नाम क्या था? ऐसा है क्या? अच्छा। और किसने कोटपुर के सुपर हीरो के बारे में सुना है? उसका नाम क्या है? जोर से बोलो। Yeah, so our next speaker is Pawan Kumar from he is a dev advocate at Polygon with 135k plus YouTube and 60k plus LinkedIn, and he is here for 8 powered app evolution. So can we have a big round of applause to call him on the stage? Also, to add on to that, so Pawan has been taking sessions on Flutter and Firebase before, so he's also a GDE. तो बहुत fan following है, and I think इधर भी बहुत सारे fans होने वाले हैं. Over to you. Thank you. So this is not my first time in Indore, by the way. कितने लोग पहले मेरा कोई सेशन अटेंड कर चुके हैं? तो आपको पता ही होगा मैं हर चीज़ पे टॉक दे सकता हूँ. So generally people know me for Flutter specific content. How many of you know what is Flutter, by the way? Just in case. अगर ये समझ आना बंद हो जाए तो फिर we can go through that. So okay. Energy नहीं है सर ख्याल में. मेरे अंदर भी नहीं. So कितने लोगों को भूख लगी है पहले बता दो फिर उस हिसाब से. Cool. ज़्यादा लोग हैं but ठीक है. So my topic is again on LLM and I realize so far like मैं सुबह से देख रहा हूँ कि ज़्यादा LLM हो गया है. अब मुझे नहीं पता इसमें मैं क्या नया बता सकता हूँ but still I try to do justice with this particular keyword. ये ऐसे बार बंद होगा क्या? या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ठीक है. So okay, let's start. How many of you code? Genuinely code. Stack Overflow. Okay. ChatGPT. काफी अच्छा ट्रांजिशन हुआ, right? Okay, so we will talk about LLM again, ठीक है? Once more. But how many of you understood what is LLM, by the way, just in case कोई ऐसा हो मेरी तरह जिसको नहीं समझ आया अभी? ये सारे आ चुका है सबको? अच्छा नहीं है. अब तो सही है, अब मैं बता सकता हूँ. So basically, as someone already introduced me, what I do, so I'll just skip this. But we will come to this main topic. How many of you follow Google I/O? Google I/O पता है आपको क्या होता है? So Google का it's a yearly event which is a very popular one, right? So but like I told you, I am mostly from the mobile background, ठीक है? Like that's my primary domain. So before that, like I had zero interest in LLMs. So but when I was watching Google I/O, so पता नहीं ये वीडियो चलेगा कि नहीं? ये चलेगा क्या वीडियो? Excuse me. चला दो फिर. नहीं भी चलेगा तो I have a backup plan. मैं से उम्मीद करके आया हूँ कि नहीं चलेगा. But because लंच होने वाला है तो रिस्क नहीं लेंगे. देख लो अगर नहीं चल रहा है तो होना है. हैक कर वापस छोड़ दो वीडियो. नहीं चला.
तो ये काफी वायरल वीडियो है, ये आपने देखी होगी शायद किसी ने। तो ये मेरा मोटिवेशन ये था। इसमें आवाज भी आ जाएगी क्या? हम पीछे से दे देंगे AI जनरेटिव AI। नहीं, दूसरे वाले के बाद नहीं दे पाओगे, इसलिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं टेस्टिंग कर लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मच मोर इंटरेस्टिंग। कोई मैं दोबारा चला लूँ। I just saw in some of the events जहाँ पे earphones actually में देते सबको, तो just hear this thing। हमारे पास है नहीं वरना हम connect कर सकते हैं। AI platform, AI, tailwind, AI first AI model. The moon lander is AI generates generative AI, powered by generative AI, with AI at the center. Leading edge AI research with applying AI to make AI, AI first, generative AI, AI, applying AI finally. I think सुबह से यही चल रहा है, right? तो मैं काफी रिलेट कर रहा था ये बचते हुए भी कि यही चल रहा है, काफी हो गया है। एक और मैं वीडियो दिखाऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे सबको समझ आ जाएगा जनरेटिव एआई क्या होता है। कितने लोगों को अभी भी पता नहीं जनरेटिव एआई क्या होता है? वैसे क्या कर रहे हो तुम सुबह सारे? क्या मोटिवेशन लेके आए हो कि आज कुछ नहीं सीखना? चलो मैं वैसे सिखवा दूंगा। ये मूवी कितने लोगों ने देखी है? मूवी का नाम बता सकता है कोई? ठीक है, तो ये पूरी जो प्रेजेंटेशन है आज की, वो इस मूवी पे आधारित है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिखेगा जिससे आप शायद रिलेट कर पाओ, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही कुछ स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। So we try to relate. We'll talk about generative AI. ये मेरा इंस्पिरेशन है। मेरे को क्यों इस फील्ड में इंटरेस्ट आया? बहुत ही इसकी फोटो कोई ना ले प्लीज। वीडियो तो बिल्कुल मत बनाना, अपलोड तो बिल्कुल मत करना। लाइव स्ट्रीम हो रहा है। सॉरी गाइस, कर देंगे। ये अपने आप चलेगा? तो ये जनरेटिव एआई का सैंपल देखा मैंने कहीं YouTube से उठाया मैंने तुम लोगों को इसलिए आजादी नहीं दिलवाई कि तुम लोग गड्डियां ऊंची रखी और रेली। So ये जनरेटिव एआई है इन टुडेज एरा। भाई इतना सही था मेरे पास वीडियो कंटेंट, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो बेसिकली दिस इज व्हाट कॉल्ड जनरेटिव एआई। ये इमेज कितने लोगों ने देखी है? लेफ्ट वाली, ठीक है, और राइट वाली। सो बेसिकली कोई ये बता नहीं सकता कि ये राइट वाली इमेज अगर मैं किसी को प्रेजेंट करूं कि दिस वाज नॉट द ओरिजिनल वन, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल जनरेटिव एआई, राइट? वो जो गांधी जी वाला था उसको भूल जाओ। दिस इज व्हाट वी वांट। अनदर एग्जांपल, ये मेरी फेवरेट इमेज, पता नहीं कितने टीम बनाए होंगे मैंने खुद। सो ये इमेज भी आपने शायद ये रेक्टेंगुलर एरिया में देखा होगा, राइट? बट दिस फुल इमेज नोबडी न्यू कभी एग्जिस्ट करेगा, बट नाउ इट एग्जिस्ट्स। एंड अभी हमें पता भी नहीं है कि सच है या नहीं है, ठीक है, बट दिस इज जनरेटिव एआई फॉर यू। कितने लोगों को लगता है कि फेक लग रही है बहुत? एनीवन? कितने लोगों को लगता है कि ये तुम हो? आओ वापस। ओके, चलो। सो जनरेटिव एआई अगर हम देखें इन शॉर्ट, दिस इज अ सब कैटेगरी ऑफ डीप लर्निंग। आई थिंक सबने ये सारे वर्ड्स बहुत सुने होंगे, but it's very difficult for people, especially students, to understand कि what is the difference between those, right? तो अगर आप इस तरीके से देखो कि एक बहुत बड़ा एक huge circle है, ठीक है? It's a part of that. It's a very smallest part of it, and this is the much more top topic in today's world, which is the generative AI. But then you learn about deep learning, ML, AI in general. So we are right now talking about generative AI. So what is generative AI? Whatever which generates content, ठीक है? And content ideally कितने टाइप का होता है? यहाँ पे देख के बता सकता है मुझे? 5 गलत है। तो पागल लग रहा हूँ कि मैं दिखा रहा हूँ कुछ और कितना टाइप का होता है?
मतलब हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, बट अदर्स हटा देते हैं, अब कितना बच गया? तो कंटेंट जनरली 3 टाइप का होता है सर, टेक्स्ट, इमेज एंड ऑडियो, बिकॉज वीडियो कुछ नहीं होता, ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस एंड ऑडियो, ठीक है, सो वीडियो डज नॉट एग्जिस्ट, बड़े पागल बनाने के लिए तुम्हें भी। सो अगेन वापस, सो बेसिकली इस मूवी में ऐसा ही कुछ होता है, तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि दिस इज माय एप्लीकेशन एंड दैट गाय इज LLM, सो व्हाट विल हैपन, ठीक है। अच्छा एक और ये भी देखा होगा सबने, मीम, इट्स अ वेरी पॉपुलर मीम, ये पता नहीं होगा टेबल कहाँ से है, राइट, सो दिस इज अगेन जनरेटिव एआई। सो अब मेरे को लगता नहीं किसी को, अब कितने लोगों को नहीं पता जनरेटिव एआई क्या होता है? गुड, पहले तुम हर चीज में ये जवाब दो, तो कितने लोगों को पता है जनरेटिव एआई क्या होता है? हाँ ठीक है, दैट गिव मी अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंस। ओके, सो व्हाट इज LLM? कोई मुझे बता सकता है? अभी मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता चल गया होगा अब तक। व्हाट इज LLM इन सिंपल वर्ड्स? एनीवन? बिकॉज़ अभी आप 2-3 टॉप तो देख चुके हो, कोई ट्राई करना चाहता है? एनीवन? ट्रांसफॉर्मर्स, हाँ ठीक है, एनीवन एल्स? अच्छा, तो एक अगर लाइन में हमको इसकी डेफिनेशन बनानी हो, व्हाट इज LLM? सो इन माय ओपिनियन इट इज, वी कैन कॉल इट वर्ल्ड्स मोस्ट sophisticated autocomplete, ठीक है, बट LLM is nothing but an autocomplete in general, ठीक है। Again, I like to be away from the description, जो समझ नहीं आती, अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट है पढ़ लो, but in general what I understood so far, because again I'm not a machine learning expert, but मेरी terms में LLM is autocomplete, ठीक है, whatever can complete something, ठीक है। अभी एग्जांपल देखते हैं, सो लाइक पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनल ML डेवलपमेंट और LLMs में क्या फर्क है, राइट। So this is what we have been learning so far, the traditional one, which requires someone to be a machine learning, like experience होना चाहिए उसके पास, right? तब आप कर सकते हो, like किसी ने सुना होगा NumPy, Panda, इन सब पे काम किया होगा, right? When you go into data science field, supervised learning and supervised learning and all those things. That means that you need ML expertise. ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे आपको रिलाई करना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको बहुत अच्छी मशीन चाहिए होती है, राइट, टू ट्रेन योर मॉडल्स, राइट, सो दैट्स अ वेरी बिग लिमिटेशन आल्सो आई वुड से, एंड मॉडल ट्रेनिंग चाहिए, टाइम एंड हार्डवेयर। व्हेन वी टॉक अबाउट LLMs, these are mostly pre-trained APIs, इसको आप फाइन ट्यून कर सकते हो if you want. It does not require ML expertise because I'm from this category. ट्रेनिंग एग्जांपल्स आपको इतने नहीं चाहिए होते हैं as such, because these are already pre-trained, and then you don't have to, like, you don't need any computation time or hardware, जो कि बहुत ही कुछ बहुत बड़ा मशीन हो, आप छोटी सी भी कोई, इनफैक्ट आप फोन पे भी यूज कर सकते हो, राइट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज प्रॉम्प्ट, राइट, आई थिंक वो भी किसी ने कवर किया ऑलरेडी, बट आई विल स्टिल ट्राई टू गो इनटू व्हाट इज प्रॉम्प्ट। ओके, सो रोजेस आर रेड, ये सबने सुना है, ठीक है। LLM क्या करेगा? ऑटो कंप्लीट, क्या होगा नेक्स्ट? LLM होता तुम्हारे। So basically this is how LLM works, right? So auto complete comes into this picture, right? एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। This is basically how we write code. So what LLM will do? This, right? So ये बहुत ही सिंपल सा है, और हमने सुना है मॉडल LLMs are large and all those things, right? Anyway, so what problems it is trying to solve, like the classification क्या-क्या है? Classification problem solve करता है, entity extraction, summarization, sentiment analysis, translation and much more, है ना? बहुत सारी चीज़ में इसका use किया सकता है. We will come to that also. So okay, for example अगर हम यहाँ पे देखें, explain this joke. I used to be addicted to soap but I am clean now, right? So model ने बताया कि what this particular thing means, right? Because it's a pre-trained model, so it will try to help you as much as it can. उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि how we can control it. तो basically उसने एक आइडिया दिया कि this is a pun on the word clean, right? And then it gives you more description, right? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, आ गया।
गिव मी नीट 5 नीट आइडियाज फॉर साइंस फॉर प्रोजेक्ट्स। कितने लोग प्रोजेक्ट चोरी करके यहाँ पे चल रहे हैं? हाँ ठीक है, मतलब सच बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी ना कभी तो सबने किया ही होगा। क्या ऑब्वियसली हमने तो नहीं किया था। मैंने तो किया है, मैंने तो किया। एनीवे सबने ही किया है ऑलमोस्ट, ठीक है। हमारे यहाँ दिल्ली में एक जगह है जनकपुरी, दैट्स वेरी पॉपुलर फॉर चोरी प्रोजेक्ट्स। और आप तो टीचरों को भी पता है कि यहीं से माल आया है, क्योंकि वो हर साल रिपीट हो रहा है। हर साल सेम प्रोजेक्ट आता है, सेम एरर्स, वो चलते नहीं है। सो बेसिकली यू कैन आस्क मॉडल्स टू गिव यू आइडियाज आल्सो, राइट? एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट this is not what we are here for. We will go into detail ki how this result is coming, ठीक है, and how we can ask the model to give us specific results, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं इस पे। These are past, is it future? What do you think? Yes. ठीक है, future जैसा कुछ पता नहीं होता, टेक्नोलॉजी, ठीक है, everything is changing so rapidly we don't know what's happening tomorrow. So that's my perspective. हाँ बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर कोई मिल गया का कॉन्टेक्स्ट चलता रहेगा, ठीक है। सो एनीवे, सो इसमें से कितने लोगों ने क्या क्या सुना है, मैं जानना चाहता हूँ। या सब कुछ सुना है? ऐसे कौन लोग हैं जो सब कुछ सुन चुके हैं? सुना तो सब है। सो ऊपर वाले की बात नहीं करूँगा, ये वाले की नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा सिर्फ दो चीजों की, एक मेकर स्वीट एंड पाम एपीआई। सो अभी वर्टेक्स एआई पे टॉक हुआ था, राइट? सो बेसिकली वर्टेक्स एआई सबने अभी देखा क्या होता है, राइट? अगर हम उसके एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो व्हाट वी कॉल इट पाम एपीआई, राइट? एंड सही एंजॉय करो। So the place where we can work with Palm API, or you can say an ID for Palm API, is MakerSuite. So I'll show you how you can use it. Like Chat GPT बहुत लोग यूज करते हैं, but the control on Chat GPT is very limited, right? हम सबको पता है कि what kind of things we can do with Chat GPT as of today. Although with time it's getting better, but still, what else we could do? So first of all, what you have to do, you have to request your API key. So आप ये website जा सकते हो. Whenever you go to your places, you can just write makersweet.google.com and request for the API key, right? That's how we will start our development journey. Now, again, आप लोग डेवलपर हो तो मैं assume कर रहा हूँ आपको पता होगा कि API की क्या होती है, right? It's a password, right? So if you lose API key, you lose everything. So prototyping कैसे करते हैं हम inside MakerSuite? That's let's see. So Google आया होगा, किसी ने follow किया होगा, तो at that time you could not use MakerSuite for production applications, but as of today you can use it, and this is working in I think 180 countries or so, and like mostly चीजें stable है as of today. अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है. One is text prompt, data prompt and chat prompt. Generally what you might have seen is either text prompt or chat prompt, ठीक है? But generally chat prompt I will say, right? Chat GPT for example. So we can do same stuff with MakerSuite also, but we can have much better control on it. अब वो हम देखेंगे कैसे कैसे. जैसे यहाँ पे कैजुअल पॉलिटिक्स एक एग्जांपल है कि आपने एक मेल राइट किया, so basically you provide some input and output as well, and then आप उससे कुछ पूछते हो ताकि वो आपको आउटपुट उस हिसाब से दे, right? We'll go into details of it. सबसे पहले prompt engineering. अच्छा कितने लोगों को ये पता है कि prompt engineering is itself a job? So अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, बाकी समझ आ रहा है. So prompt engineering again, prompt engineering होता क्या है पहले समझते हैं, ठीक है? ये कहीं आएगा बीच में, ठीक है? So prompt engineering मैं सिखाता हूँ क्या होता है. Prompt engineering is nothing but an art, ठीक है? Because prompt लिखना ही बहुत बड़ी चीज होती है. आपने अभी तक देख लिया होगा ना, everything depends on how you write prompt. And like ड्राइंग करना सबको आता है, राइट? मतलब जो बेसिक्स होते हैं सबको पता होता है, राइट? कि देयर इज सम ब्रश, सम कलर, ये वो. बट देन इट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटिविटी ऑफ दैट पर्सन कि वो कितना अच्छा मतलब एक आर्टिस्ट बन सकता है, राइट? सो सेम कैटेगरी इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली, कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो
एंड आप कितना ज़्यादा मॉडल तो ट्रेन है ऑलरेडी, बट हाउ यू कैन यूज इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल. सो विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ इट. एंड आई थिंक इसको प्रॉम्प्ट डिजाइन भी बोलते हैं, प्रॉम्प्टिंग भी बोलते हैं, सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. So basically it's like what kind of output you want. That's what prompt engineering is. जैसे analogy factory का example देखते हैं. So यहाँ पे आपने क्या किया? This is again from Maker Suite. You provided some inputs and outputs, right? ये सब आपने ही किया. जैसे आपने input दिया busy, तो like a bee, something, living in a bubble. ऐसे 4-5 example दिए. तो छठी बार आप जब एक word उसको दोगे, so it will give you the output in the same way. जैसे आपने उसको सिखाया. This is what we call analogy factory, right? अभी और examples चाहेंगे, ठीक है? So basically, synthetic data generation is nothing but training data जब आप generate करते हो, right? This is the training data which you are giving, right? तो ये आप कोई CSV file से upload कर सकते हो या let's say आपने खुद specify किया. So there are various ways. किसी ने Kaggle का नाम सुना है? Right? Yes. So Kaggle is what? There you find a lot of training data, right? या किसी ने वो बनाया ही है, CSV फाइल्स भी मिलेंगी आपको, बहुत कुछ मिलेगा, राइट? सो दिस इज द सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ. ओके, गॉट इट. LLMs for chat. This is the most interesting one because most of us are using it. We don't know we might be using it, but actually सब यूज करते हैं, राइट? मोबाइल फोन जो भी यूज करता है, they are already using LLMs, राइट? या आप मशीन लर्निंग भी यूज कर रहे हो. आपकी बैटरी जो है पूरी फोन की सब कुछ इस पर रिलाई करती है. द वे यू आर लाइक यूजिंग योर फोन टुडे, सब कुछ डेटा है, राइट? एट द एंड ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग हो रही है एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट. ठीक है. सो ये एक और प्रॉम्प्ट है टॉक टू ड्राइवर, जहाँ पे आप एक एज ए यूजर आप स्पेसिफाई करते हो लाइक व्हाट इज द, लिखा मुझे खुद नहीं दिख रहा है, deepest part of the ocean, and then some model is giving some answer, right? So basically this is how chat works, right? एक आपने अगर कोई ऐप चलाई है Zomato, Swiggy वगैरह, तो जो चैट वाला जो पार्ट होता है, हेल्प जो सेक्शन होता है, आप देखोगे कि मोस्टली कंपनीज आर इंटीग्रेटिंग LLMs into that. ताकि 90% ऑफ द टाइम उनको आंसर ना करना पड़े, यानी कोई एक्स्ट्रा एक रिप्रेजेंटेटिव ना चाहिए हो आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस LLMs आपको आंसर कर सकेंगे. फिर लास्ट में एक ऑप्शन आएगा कि अगर आप अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए, जो इंडियन ऑडियंस नहीं होती है, तो फिर देयर इज एन ऑप्शन टू जस्ट टॉक टू समवन रियल, राइट? बट ये उनके लिए इतना हैंडी काम नहीं करता बिकॉज इंडिया में सब चीज़ें एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल है. किसी ने देखा होगा गूगल आयो में बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हुई जो इंडिया में कभी आई नहीं पाई, क्योंकि इंडियंस बहुत स्मार्ट है. ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है. बट ठीक है, आप कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं. सो बेसिकली चैट कैसे काम करता है, ओके? सो द फर्स्ट थिंग इज कॉन्टेक्स्ट. सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना पड़ता है बिकॉज वंस यू सेट द कॉन्टेक्स्ट देन इट गेट्स इजियर फॉर LLMs टू अंडरस्टैंड कि क्या किस बारे में बात हो रही है, राइट? लाइक अगर आप कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हो कि यू आर अ बॉलीवुड रिपोर्टर, लेट्स से, ठीक है, एंड यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन, तो उसको पता है कि बॉलीवुड के बारे में क्वेश्चन आने वाले. तो इफ यू आर आस्किंग who is Salman Khan, so that it will give you answer. Then you next question ये जरूरी नहीं है कि आप पूछोगे सलमान खान का नाम लेके, you can just ask him like what's his age, right? तो he like that model knows कि किस बारे में बात हो रही है and वो पूरा context समझता है. So यहाँ हम जैसे बोले what's quantum physics, तो उसने आंसर दिया, but if I don't get it what's an atom is this, right? So the context is set. So this is how you will work with the conversation part in LLM, which we are talking about here, Maker Suite. तो Maker Suite में ऐसे काम होता है, ठीक है? ठीक है. So what kind of application you can build? Again, you can build customer service, जो आपने देखा भी होगा. Personal assistance आपने देखे होंगे, अभी बहुत common चीजें हैं. Interactive storytelling. Let me tell you, बहुत सारे filmmakers हैं as of today. They have started using LLMs to generate stories, right? एक स्टोरी आपने वीडियो में देखी थी पहले, वो बहुत शॉर्ट स्टोरी थी, बट उससे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बनती है. कन्वर्सेशनल प्रोडक्ट रिकमेंडर, जिससे आपको प्रोडक्ट रिकमेंड हो सकता है बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट्स, कि आपसे पूछे जाएंगे 2-3 चीजें. जैसे आप इंस्टाग्राम कितने लोग यूज करते हैं, रील्स कितने लोग यूज करते हैं, बाकी लोग नहीं करते, मैं मानता ही. सो बेसिकली जब आप रील्स एक्सप्लोर कर रहे होगे ना, तो आपने एक नई चीज नोटिस की होगी, 2 ऑप्शन आते हैं, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड.
right? So that's basically this कि कन्वर्सेशनल प्रोडक्ट रिकमेंडर उसको और एनहांस किया जा सकता है, उसके बाद और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट अभी वो नहीं पूछता बिकॉज इंस्टाग्राम डज नॉट वांट टू लाइक टेक योर टाइम, है ना. सो इट जस्ट वांट्स कि आप जितना छोटा इनपुट दोगे उतना ज़्यादा उसके लिए इजी रहेगा कि आपको ऐप पे रोक के रखे. और आप टिकटॉक पे भी जा सकते हो, वो यहाँ बैन है, बट आप कुछ और चला सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है ना. सो कस्टमर फीडबैक कलेक्शन और बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है LLM के. चलो फटाफट अब पूछते हैं इसके अंदर. पाम 2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जब हम APIs की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को API यूज करने आती है ऐप्स में? कम लोगों को आती है, कोई बात नहीं, सीख जाओगे. सो पाम API अभी 3 चीजें करता है, टेक्स्ट, चैट, एम्बेडिंग आई थिंक सुबह यू मस्ट हैव सीन क्या होता है, राइट. टेक्स्ट और चैट आपको पता ही है कि हाउ इट वर्क्स. सो बेसिकली टेक्स्ट एक डिक्शनरी की तरह मान लेते हैं, चैट आपको पता ही है इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, एंड एम्बेडिंग इज मोर लाइक कि आपने एक PDF डॉक्यूमेंट दे दिया उसको, ठीक है, एंड आपने पूछा कि बताओ इस चीज का वर्जन क्या है, तो वो रीड करेगा पूरे डॉक्यूमेंट को एंड देन इट विल ट्राई टू गिव द बेस्ट आउटपुट आउट ऑफ इट. सो बेसिकली टॉकिंग टू डॉक्यूमेंट्स इज व्हाट एम्बेडिंग इज. तो ये तीनों चीजें अभी पाम API में सपोर्टेड है. देयर इज नो इमेज सपोर्ट और एसेट लाइक DALL-E 3 और ये सब आपने अपने सुना होगा. सो प्रॉम्प्ट डिजाइन अगेन हम इसके बारे में जान चुके हैं ऑलरेडी. तो यहाँ पे देखते हैं कैसे काम करता है. लाइक आप देखो, समराइज और टेक्स्ट ऑफ X, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और आउटपुट ये दिया, एंड देन यू बेसिकली यू स्पेसिफाई सम इनपुट्स एंड इट गिव्स यू आउटपुट बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा कि प्रॉम्प्ट्स काम कैसे करते हैं. सबसे पहले ये कुछ रूल्स होते हैं व्हेन राइटिंग प्रॉम्प्ट्स. वी आर लेजी. चैट GPT का सबको पता है कि वो एक बार में चाहते हैं सारे काम हो जाए, ठीक है, छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज दैट्स हाउ वी वर्क. बट that's the reason we don't get sufficient information या the required information because हम prompt लिखना नहीं चाहते, lazy हैं हम लोग. तो उसके लिए कुछ rules होते हैं कि be concise, कि आप बस उतनी चीजें पूछो जो जरूरी है. Be specific and well defined. उसका एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होता है. Ask one task at a time and improve quality by examples. ठीक है, these are very common parameters. अभी सुबह एक टॉक थी जिसमें दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड. कितने लोगों को समझ आया कि जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग होती है, वन शॉट क्या होती है? चलो मैं एक आइडिया देता हूँ. जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछा, फ्लटर पे कुछ लोगों ने काम किया ना, सो देयर इज अ विजेट कॉल्ड फ्यूचर बिल्डर, राइट. तो ये कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट फ्लटर. लेट्स से कि हम जावास्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं, रिएक्ट की बात कर लेते हैं. रिएक्ट में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, राइट. तो HTML की बात करते हैं, हम बोलते हैं p टैग, ठीक है. तो हाउ डू आई यूज द p टैग, लेट्स से. तो इट विल जस्ट गिव यू एन आंसर कि इट कुड बी कैटेगराइज्ड अंडर वेब डेवलपमेंट, ठीक है, कि व्हाट इज लाइक p टैग, अगर आपने ऐसा पूछ लिया, ठीक है. तो दिस इज बेसिकली जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग. ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं, उसके बेस पे एक आंसर मिल गया, खत्म बात. फिर एक और होता है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें आप क्या करते हो, आप कुछ कुछ उसको समझाते हो पहले, ठीक है. जैसे मैंने बोला कि क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट विजेट्स इन द कैटेगरीज. हाउ डज द कंटेनर विजेट वर्क? अगेन div, ठीक है, div कैसे काम करता है. सो उसने बोला इट्स अ कोर विजेट, ठीक है. तो ये बोल सकता है इट्स अ कोर HTML कंपोनेंट, लेट्स से. ये आपने ही बताया उसको, ठीक है. दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग द मॉडल. सेकंड आपने बताया कि रेज बटन एक मटेरियल विजेट होता है. थर्ड आपने बताया क्यूपर्टिनो एक्शन सीट क्यूपर्टिनो विजेट होता है. नाउ यू विल आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है. The question was how do I use future builder widget, right? So the answer now it will give is based on how you are training it. तो हमने ट्रेन उसको एक एक वर्ड में किया, ठीक है. सो हमें आंसर भी एक वर्ड में ही मिलेगा आउट ऑफ दिस, नॉट आउट ऑफ दिस बट जनरली लाइक दिस, ओके. दिस इज व्हाट वी कॉल फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग. सबसे जो इंपॉर्टेंट, यस. इज इट समथिंग सिमिलर टू AGI? AGI क्या होता है? AGI by OpenAI. Achha, I haven't used it. So AGI is like some of their model specific. I haven't used it, तो मुझे नहीं पता. But this is how any model works in the world. ठीक है, अभी सारे मॉडल सेम ही कॉन्सेप्ट LLMs का नहीं चेंज होता है ना. मॉडल्स कैन बी वेरी डिफरेंट. लाइक इफ वी टॉक अबाउट llama, OpenAI, palm API, सब एक ही तरह से काम करते हैं. So ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉम्प्टिंग मैकेनिज्म है, चेन ऑफ थॉट्स. जैसे आपने बहुत लोगों ने एक बार GPT से पूछा था कि 2 + 2 कितना होता है. आपको पता है क्या आउटपुट मिला था? 5.
है ना? क्या ये सही था या गलत था? गलत था। मैं बोलता सही था। कैसे? करेक्ट, मतलब मॉडल कभी सही या गलत आउटपुट नहीं देता, ठीक है? मॉडल वो देता है जो उसको सिखाया जाता है, ठीक है? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन द मंथ ऑफ मे? आंसर इज 720 आवर्स। ये सही है या गलत है? वैसे पता है किसको कितने होते हैं? अच्छा, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा आपने अपने जो भी आप यूज कर रहे हो, तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा, हाउ मच यू कैन रिलाई ऑन दैट आंसर? कभी आपने कुछ सोचा है? जैसे प्रोग्रामिंग के तो बहुत सारे वो दिए होंगे ना, बताओ कैसे करना है, तो फिर आया कुछ आउटपुट लेट्स से, बट कितना रिलायबल है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, ये जानने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, राइट? अनलेस वी डू इट बाय आवरसेल्फ, राइट? बट व्हाट आई कुड डू टू मेक श्योर कि आंसर करेक्ट ही आए, राइट? That's where chain of thoughts comes into the picture. अभी काम कैसे करता है? Because this is how you will learn कि prompt लिखे कैसे जाते हैं, right? जो तरीका होना चाहिए prompt लिखने का. So ideally, like me or any one of you, probably जब हम लोग जाएंगे किसी भी tool पे, तो this is how we will write it, right? कि बताओ भाई कि मई में कितने मतलब hours होते हैं मई month में, ठीक है? और ये आंसर हमको मिलेगा, most probably ये चांस है, ठीक है? बट हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका ही गलत है, बिकॉज वी विल नेवर गेट द परफेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर, ठीक है? और हमें पता भी नहीं है कि करेक्ट है कि लेट्स से कि ये करेक्ट है, बट अगेन कोई तरीका नहीं है इसको वो करने का, वेरीफाई करने का. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो ये कैसे करेक्ट होगा. सो अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस है. हमने बोला मारिया हैज 4 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है? She uses 18 oranges to make a large juice. Later, her friend gives her 2 more dozens of oranges. How many oranges does she have now? तो उसने आंसर भी दिया है खुद ही कि Maria initially has 48 oranges. When she uses 18 oranges to make juice, she is left with 30 oranges, right? Her friend gives her an additional 24 oranges. यानी 30 plus 24, the answer is 54, right? अब उसने सेम क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी आवर्स इज देयर इन द मंथ ऑफ मे? नाउ द आउटपुट इज नॉट द सेम. आउटपुट, द मंथ ऑफ मे हैज 31 days. As each day has 24 hours, this means that the month of May has 31 into 24, which is 744 hours. The answer is 744. पहले क्या आंसर था? 720. But हमें उस टाइम ये नहीं पता था सही है या गलत है. But this time we know it is absolutely correct. क्या चेंज हुआ? Prompt, right? But this is how you will talk to models. Like this is the better way of asking questions, right? इसको हम chain of thoughts prompting बोलते हैं. And I think अब आपको समझ आया होगा कि prompt कितना important होता है, right? And now you can understand कि why it is important कि हम सही question पूछे सही तरीके से. क्योंकि पिछला question भी सही था वैसे, question ये भी सही है. बस दोनों में फर्क है कि जो confidence है ना, वो उधर नहीं था, इधर है. बिकॉज हमारे पास मैथ्स है यहाँ पे, पिछली बार मैथ्स नहीं थी हमारे पास. ले लो फोटो पहले, हो गया? ठीक है, देख लो. एनीवे, सो बेसिकली इट्स ऑल मैथमेटिक्स एट द एंड, ठीक है? हर चीज में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है. कितने लोगों को मैथ्स पसंद नहीं है या नहीं है? मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, हमेशा पसंद है. बट समवेयर मैथ्स आपकी जिंदगी में आ जाएगी कहीं ना कहीं से घूम फिर के, छोड़ेगी नहीं कभी. कितने लोगों को एनिमेशंस में इंटरेस्ट है? अच्छी लगती है देखना? एनिमेशन इज लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अबाउट मैथमेटिक्स, बट एनिमेशन में तो सब कुछ मैथमेटिक्स होता है. वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, सब कुछ आ जाता है. एनीवे, तो जिंदगी में आता रहेगा इसको, हमें मैथ्स ही मैथ्स है. अब पाम एपीआई के साथ कैसे करते हैं? मैं ख्याल में भूख का टाइम, कितने लोग बोर हो चुके हो पहले ही बता दो, खत्म कर दूंगा. तुम हो चुके हो, ठीक है? बेहतर बैठना पड़ेगा तुम्हें भी, कोई तुम्हारा चॉइस नहीं. मुझे पता चल जाता है ना कि अगली बार से तुम लोगों को ब्लैक करना है. एनीवे, रेस्ट एपीआईज अगर आपको यूज करने आती है तो बेसिकली यू कैन यूज पाम एपीआई विद एनीथिंग, राइट?
What you need is just an HTTP library. ठीक है, या आप वो भी खुद से लिख सकते हो तो फिर बात ही खत्म। जो मैं assume कर रहा हूँ नहीं लिखोगे, या आप पूछोगे कहीं से कैसे लिखते हैं, prompt लिखोगे कि how to write HTTP API. Please give me full example, full source code. Okay, I don't understand the comments. Please write it as an example. So basically, you can use Python, Node.js, Swift, Java, whatever you prefer, or Flutter if you want Dart. तो basically अभी यहाँ पर हम देखें तो जब आप उसमें जाओगे the IDE, then you write some prompt. ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है get code, ठीक है, जो आप देख सकते हो on the top right. You can click on it and you will get the code out of it. अब फटाफट थोड़ा सा बताता हूँ because सबको भूख लगेगी obviously मुझे भी. तो this is how you write. जब आप get code पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि how you can use it with Python, JSON, JavaScript और whatever you want to use it. और आप उसको Colab में भी खोल सकते हो. And then Palm API for text हम देखते हैं काम कैसे करता है. It's like पहले आप सबसे पहले इंस्टॉल करते हो. ये तो दुनिया का दस्तूर है. इंस्टॉल करेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे, एंड देन API की डालेंगे. लेकिन बिना इसके तो चलेगा ही नहीं, राइट? तो इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. API की आप वहाँ पे जाके भी क्रिएट कर सकते हो. सो इट्स इजी. देन आप बेसिकली एक लूप लगा रहे हो जिसमें आप ये बोल रहे हो कि जनरेट टेक्स्ट जहाँ पे भी होगा देन यू विल डू समथिंग अबाउट इट, राइट? तो जनरेट टेक्स्ट वाले में उसने कुछ मॉडल्स के नाम दिया आपको, ठीक है? जैसे एक मॉडल है टेक्स्ट पाइथन 001, राइट? ऐसे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं ना, GPT के भी होते हैं, GPT 3.5 टर्बो, ठीक है, नॉर्मल GPT 3.5. सिमिलरली हियर यू विल सी ऑल द मॉडल्स. तो आप इसमें से चूज कर सकते हो जो भी मॉडल करना है. एंड बेसिकली दिस इज योर प्रॉम्प्ट. यू विल राइट अ प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट क्या है? स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग कितने लोगों को नहीं पता है यहाँ पे? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ प्लीज. है कोई पीछे, बाद में मिलेंगे. So basically this is how, like, अगर आपको SDK यूज कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा generate text एक मेथड. You can provide the model prompt, ठीक है? अगर आपके पास कोई SDK नहीं है then it's a normal HTTP library, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. And वो पहले होती है शुरू में बड़ी चीज. JSON parsing भी बड़ी चीज होती थी मेरे टाइम पे. अभी जो एक सिर्फ एक मेथड होता है बस JSON encode और decode, खत्म बात. उस टाइम ऐसा नहीं होता था. So then you can set a temperature is basically to get to tell the model कि आपको कितनी creativity चाहिए, right? अगर आपको बिल्कुल creativity नहीं चाहिए, you want to the point answer, तो आप temperature उसका low कर दोगे, ठीक है? ठीक है, हो गया. And chat का भी देख लेते हैं. तो chat is very simple. आपको context set करना होता है, इसमें difference है. Context, I told you what is context. Once you set the context, then you can give some examples also कि ऐसा ऐसा मैं क्वेश्चन पूछूंगा और ऐसा ऐसा तुम आंसर देना. And then you just provide the examples. Message is what you are going to ask. You can जब आप GPT में करते हो तो आप रोल also specify करते हो कि एज ए यूजर आप पूछ रहे हो, एज अ असिस्टेंट आपको क्या जवाब देना है, सिस्टम क्या होना चाहिए. So right now you don't do it in Palm APIs, and I think it's very simple. तो मैंने एक DevFest का बॉट बनाया था जिसको देखना मैं दिखा सकता हूँ. So basically मैंने इसको कुछ prompts दिए, right? And मैंने जब सिर्फ इतना बताया कि जो इवेंट है वो होटल सयाजी में हो रहा है, that's it, ठीक है? Now these are pre-trained models. तो जब मैं क्वेश्चन उससे पूछूंगा ये, तो वो सिर्फ मुझे ये तो बताएगा होटल सयाजी में हो रहा है, बट वो मुझे पूरा इंस्ट्रक्शन भी देगा, ठीक है, कि कहाँ है वो, जो मैंने उसको नहीं सिखाया. But I will just give some ideas. तो जब आप examples दे रहे होते हो, those are ideas. कि इसके बेसिस पे it will give you better results, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ सिखाना है उसको पता है सब कुछ, but you just set the context and some examples कि this is how I'll communicate. अभी मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, otherwise मैं इसका डेमो भी शो करता, but if you are interested, I am here only. You can set your toxicity and based on that you will get output. So I hope कि ये थोड़ा सा पीछे रहेगा. And this is how you can directly go g.co/palm अगर आप कोई फोटो नहीं लिए हो तो. This is the easiest way. Okay, I think. और एक चीज जो सबसे important मैसेज था वो कोई मिल गया में नहीं था,
वो दूसरी मूवी में था, उसका दूसरा पार्ट क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम मत करना बस, क्योंकि AI is very powerful, we all know that, right? But it's all about how we use it. Someone was asking about regulation and all. They will come anyway, but still they cannot limit you, right? So it's just कि power को अच्छी तरह से use किया जाएगा, तो it will be good for humanity, it will be good for everyone. और अगर वो गांधी जी वाला काम करोगे, तो फिर क्या ही कर सकते हैं? Anyway, thank you. This is URL to my web page. वहाँ पे आपको दुनिया भर के जो लिंक चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे. And if someone is interested in getting my Flutter ebook, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपको फ्री में दे दूँगा. ऐसे फ्री में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा. Okay. So same QR code है, ठीक है, we have done. वापस आते हैं. Thank you. Thank you so much, Pawan. Thank you. Let's have a huge round of applause for Pawan, please. Okay, so if anybody has any questions, they can contact Pawan in the export now. कहीं पे? कहीं पे? इसी बिल्डिंग में कहीं पे. Okay. इसकी गारंटी नहीं है मेरी एक्सपर्ट लाउंज की. Okay, तो इस बिल्डिंग में कहीं पे भी you can contact Pawan and Thank you. Thank you so much. Also, we would like to express our gratitude. इधर ही रहिए. So we'd like to invite Darshan, Akhil. Let's have a round of applause, please. Thank you. Thank you. Thank you so much, folks, for your patience. So बजर भी बज रहा है और शायद पेट में से भी कुछ आवाज आ रही होगी ना. So just informing you, food is open for you. I guess अभी 2 के around बज रहे हैं. So it would be open. I mean we are continuing the ML track from 2:30. So fill your times. Okay, so if anybody wants to network, खाना ditch करने की इच्छा हो, they are free to do that. But we would recommend have your lunch, network around. ये बहुत अच्छा करेगा. You will find very good people here. And please, I would request you to leave the hall quietly and nicely, ताकि किसी को धक्का मुक्की ना हो. Okay?
मेरा वाला डाटा तो अलग जा रहा है
Indore. On the count of 3. 1, 2, 3. थोड़ा जोर से. 1, 2, 3. Okay, तो हम कौन से ट्रैक पे हैं? मशीन लर्निंग की तो शाउट करेंगे ना? We are ML enthusiasts. Yes. So on the count of 3. 1, 2, 3. Machine learning. Machine learning. Now we go. 1, 2, 3. Machine learning. 1, 2, 3. Machine learning. Nice. Okay, so we had a little bit of mythology, but before this, हमारा एक बहुत अच्छा presentation था by our favorite speaker, Pawan Kumar. So I thought he covered most of the topics on LLMs, right? सबने सुना था बहुत अच्छे से. So we were also talking about prompt engineering, how we are going to give prompts. So we have a few words over here. Okay? This is a short bit of an activity. So what we will want is, इनमें से कोई भी 5 words pick करो of your choice. Give a prompt to the LLM of your choice, Bard, ChatGPT, anything, and maybe ask it for a story. So basically हमको एक short story बनानी है by giving the prompt. और prompt आपके ऊपर है. You are the guys who are engineers. और ये हमारे सामने list है. So we will be taking at most 5 words from each of these. So take 5 words from the slide, give a prompt to the LLM, get a story out of it. और एकदम कथा नहीं चाहिए, छोटी सी short सी story, 250 words maybe. So कौन ready है? इतने से ही लोग हैं क्या? चलो 2 मिनट का टाइम देते हैं and we want it quick. जिसका सबसे पहले होगा उसको कुछ प्राइज मिलेगा. Let's get this started. 5 ना? Yes, just take any random 5 words, make a prompt, give it to an LLM, and get a story. That's it. कितना छोटा सा task है. We'll give you 5 minutes. अब वो 5 minutes आप कैसे utilize करो, it's on you. So the first one to come up with a nice story will have something. Not just first, I guess. एक दो we can move, but let's hear it from you guys. Okay. You can see on mine. So I just picked the few first Yeah, you words. have to go with the words, then the story. Okay, so first word is penguin, second is adventure, third is giggles, and fourth is dance, and fifth is rainbow. Okay, so the chat GPT just बना के दिया जल्दी. The adventurous penguin waddles towards the vibrant rainbow. Its black and white feathers glistening with excitement. As it reached the colorful arc, the penguin couldn't resist the joyful dance, creating giggles that echoed through the icy landscape. Soon other animals joined the impromptu party, turning the frozen tundra into a lively celebration of friendship and laughter. That's it. Thank you. Nice. Thank you. Done. Done. We have another. Yeah, we have another. Let's go. I don't know how, but Bard has somehow known that we are sitting in Indore, and he has created a story. So he chose I gave him a random prompt that among all the things you can choose any 5 words. So he chose penguin, hula hoop, adventure, pickle, and wonder. Here comes the story. The title is The Penguin Hula Hoop Adventure. Once upon a time in a magical city in Indore, India, there lived a penguin named Pickles. Pickles was very adventurous penguin. He loved to explore new places. One day Pickle saw exploring the city. He was a group of children playing with hula hoops. Pickle had never seen a hula hoop before
and he was immediately fascinated. He asked the children if he could try hula hooping, and they were happy to teach him. Pickle was a quick learner, and he soon became very good at hula hooping. He could hula hoop for hours on the end, and he even started to invent his own hula hoop tricks. One day, Pickles decided to go on a hula hoop adventure. He packed up his hula hoop and set off to explore the city. Pickles hula hoop all over Indore. He hula hooped past the Devak Fort, the Rajwada Palace, the Lal Bagh Palace. He even hula hooped through the narrow streets of Sarafa Bazaar. He everywhere went to. People were amazed his hula hoop skills. Pickle's hula hoop adventure took him to all corners of Indore. He hula hooped with children in slums, tourists in the airport. Pickle even hula hooped with the elephants of the zoo. Pickle one day, Pickle was hula hooping in the park when he saw a group of people gathered around a large stage, and Pickle went over to investigate, and he saw that it was DevFest 23 conference. Pickle had never been to a conference before, but he was curious, so he decided to check it out. Pickle's hula hoop hopped in his way and stage introduced himself to organizers. The organizers were impressed by Pickle's hula hooping skills, and they were invited to perform at the conference. Pickles was thrilled, and he was always dreamed of performing with the large audience. On the day of conference, Pickle took the stage and gave the performed lifestyle. He hula hooped and he juggled. He even did a few magic tricks. The audience was amazed and they cheered for Pickle, and so it goes on. But I don't know, I just gave him the image and he was able to get it that we are in Indore, we are doing something. And let's hope we are enjoying it. Yes. So let's scoot for Pickle. Come on guys, थोड़ी तालियां हो जाए. इसका hula hoop सहज ही में नहीं हुआ बस. वही रह गया था. बाकी सब उसने. How is the penguin coming to Indore? Zoo में भी नहीं है. Okay, so moving forward, thank you so much for participating. And as much as we would love to hear more stories, we have to move forward because we have very good speakers lined up. So, how is this? If I give you 1,000 lines of code and I'll ask you to optimize it. चलो, optimize तो दूर है जाओ. If I'll ask you to just get the error out of it, कहीं error आ रहा है तो, how many of you are so confident that you can debug it? Just raise a hand. किसी ने सुना? ऐसा नहीं होता ऐसा. Okay, so there are a few people who are confident enough, but for the other folks, I think maybe they will need some help. Okay, similar to that, I think Tanmay, whenever we are ML enthusiasts, right? So जब तुमने शुरू किया था, so you needed a guide or somebody, या फिर you just jumped in like Pickle. I guess I was a pickle. I was jumping from one thing to another. Okay, but to save some time from jumping from one thing to another, we have our very prominent speaker with us. So presenting Mr. Himanshu Ramchandani. He is an AI advisor and data strategy consultant, and he is going to tell you about how can you become an AI master. And he is a very good speaker himself, so I won't be taking up that much time to introduce him. Please sir, come on the stage. Have a huge round of applause, please. Hello. Hello everyone. So देखो बहुत लाइट वेट सेशन है. ज़्यादा हम लोग डिटेल में जाएंगे एल्गोरिथम्स के और बाकी चीज़ें जितनी भी होती हैं. ठीक है, हम लोग इंडस्ट्री को समझेंगे और जॉब मार्केट क्या है उसको समझेंगे. कैसे आप लोग एक रोड मैप फॉलो कर सकते हो, जिस रोड मैप को लेके आप एक पोजीशन बना सकते हो मार्केट में. ठीक है, सो हम इन चीज़ों को लेंगे. ओके, चलिए यहाँ पे टर्म मैंने यूज़ किया मास्टर, एआई मास्टर. ठीक है, अभी एक्सपर्ट भी पोर्ट्रे कर सकते हैं अपने आप को, और एक्सपर्ट बनने के लिए काफ़ी सालों की मेहनत लगती है. हम लोग डायरेक्टली नहीं बन सकते. जैसे अगर आप एक इंडस्ट्री में जाके कहते हैं कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर हैं, और अगर वो उससे पूछेगा कि अभी आपने क्या किया है, आप कहते हैं कि आप फ्रेशर हैं, तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा. ओके, सो आपको काफ़ी सालों का
मेहनत चाहिए उस पर, और तब आप अपने आप को एक एक्सपर्ट कैटेगरी में रख सकते हैं। एक्सपर्ट भी अपने आप में एक्सपर्ट नहीं होता है, क्योंकि हर बार आपको कोई ना कोई आपसे बेटर मिल जाएगा मार्केट में, है ना? करेक्ट। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। ओके, ये हमारा अल्टीमेट आज का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज दिस, कि हम अपना खुद का रास्ता कैसे बने इस फील्ड में। ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग, आप लिंक्डइन ओपन करोगे, हर कोई अपनी प्रोफाइल में लिख देता है कि वो एआई एक्सपर्ट है या एडवाइजर है या कंसल्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, नोट भी की होगी सभी लोगों ने, कि हर कोई ये चीज़ देख रहा है कि मैं डेटा साइंस इंटर्न हूँ इस पर्टिकुलर कंपनी में। ओके, सो क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन इन सभी के बीच में अपना पार्ट कैसे बनाए, ठीक है, करेक्ट। तो इस पर हमारा डिस्कशन रहेगा। ओके, चलिए, तो एजेंडा के कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल 6। ओके, इन 6 पॉइंट्स पर हम लोग वर्क करेंगे। एआई फील्ड को समझेंगे, कौन कौन सी है, कितने चीज़ों के आपने नाम सुने हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ओके ये चीज़ें पॉसिबल है, ऐसा ऐसा होता है। ओके, देन हमारे पास है जॉब मार्केट पे स्केल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जॉब मार्केट करेंटली क्या है और पे स्केल क्या रहेगी। ओके, देन हमारे पास कि हम लोग रोड मैप क्या फॉलो करें, आज हम लोग क्या करना सीखें। ओके, कि हम लोग कुछ टाइम में वहाँ पर पहुँच जाए जहाँ हम जाना चाहते हैं। फिर हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क और पोर्टफोलियो, एंड फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है ब्रांड, पर्सनल ब्रांड, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट मैंने आप लोगों के लिए एक एआई चैलेंज बनाया है, ठीक है। सो वो एआई चैलेंज से कुछ रूल्स हैं, वो आप फॉलो करके अपना एक पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट से अपना, दैट इज एआई फील्ड्स एंड डिफरेंसेस। तो एआई फील्ड्स में आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे, जैसे कि आपने सुना होगा डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, LLMs और जनरेटिव एआई, सब लोग ये नाम यूज कर रहे हैं। ओके, सो ये एक बेसिक वेन डायग्राम है जिससे आप एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ओके, सो एआई एक बहुत वास्ट फील्ड है, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर आप देख रहे हो उन सब के खत्म होने पर आपको एआई जनरल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा, जो उसमें काफ़ी टाइम है। ठीक है, सो अब एक डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल एज ए ह्यूमन और एक मशीन में क्या डिफरेंस है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, आपने कभी घड़ी नहीं देखी है, मान लीजिए आपने कभी अपनी लाइफ में घड़ी नहीं देखी है, आपको पहले दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से दिखती है। ओके, दिस इज अ डिजिटल वॉच। ओके, एज ह्यूमंस हम लोगों को ज़्यादा एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है, करेक्ट। इसके बाद दुनिया में आप कभी भी घड़ी देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये घड़ी, करेक्ट। ऐसा ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, मिनिमम एग्जांपल्स पे हमें पता है कि क्या करना है, बात समझ में। लेकिन मशीन ऐसा वर्क नहीं करता। अगर मैं मशीन को बोलूँगा या एआई मॉडल को बोलूँगा कि ये घड़ी है और मैं इसको घुमा के दिखाऊंगा तो वो पहचान नहीं पाएगा, बात समझ में आई। ठीक है, हमें उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग मैथमेटिक्स यूज करते हैं, ट्रांसपोज यूज करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, जो लीनियर अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा, करेक्ट, उसको ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है आपके पास। लीनियर अलजेब्रा मैथमेटिक्स सभी ने पढ़ा है, कॉमर्स वाला है क्या लोग यहाँ पर? प्रेडिक्शन मॉडल्स में काफी काम आता है, न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन है, ओके। रियल वर्ल्ड रोज यूज करते हो आप लोग सभी? एनीवन? वेदर एप्लीकेशन, सॉरी, वेदर एप्लीकेशन, वेदर एप्लीकेशन, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलेटर, यस, डेटा प्रेडिक्शन, डेटा प्रेडिक्शन। ओके, देखिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा में क्या होता है, मैट्रिसेस, वेक्टर्स, करेक्ट। मैट्रिसेस का आपके सामने एग्जांपल है आपका फोन स्क्रीन, ये स्क्रीन दिख रही है, ये पिक्सेल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर्स को। ओके, नंबर्स कहाँ से आएंगे, RGB कलर्स से। ओके, रेड ग्रीन ब्लू, ये चीज़ आपको पता है। आपके सामने जो इमेज दिख रहा है या स्क्रीन दिख रही है उसमें आपको पता चलता है कि 1080 पिक्सेल्स का मतलब ये है कि एक बार में आपके सामने 1080 पिक्सेल्स एक फ्रेम में आ सकते हैं। दैट्स व्हाट 1080 पिक्सेल्स इज, 720 इज, और जो भी आपके फोन के रिजोल्यूशंस है। ओके, करेक्ट। तो मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा एग्जांपल, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है एआई में। तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप थोड़ा सा मैथ समझने की कोशिश करेंगे किसी भी एल्गोरिथम का,
तो वो क्लैरिटी आ जाएगी कि ओके ये चीज़ हो गया, ठीक है। चलिए, तो आप ये देख सकते हैं सब फील्ड है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम लोग फीचर इंजीनियरिंग यूज करते हैं और डीप लर्निंग में उसकी कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में कि मशीन लर्निंग में हमें फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत है, ठीक है। चलो हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, आप लोग ये पढ़ी लोगे ऑब्वियसली कि ये चीज़ें क्या होती हैं, इन सब में डिफरेंसेस क्या है। बाकी आपको एक आइडिया हो गया होगा कि क्या हो रहा है। जो लोग डेटा साइंस में वर्क करना चाहते हैं वो देख लीजिए ध्यान से कि आप एक हिस्सा यूज करते हैं मशीन लर्निंग का आपके पूरे सॉल्यूशन। इवन दो आप एक मशीन लर्निंग सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, उसका 10% हिस्सा होगा मशीन लर्निंग मॉडल, बाकी पूरी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगी बाकी पूरे आर्किटेक्चर में। तो कुछ भी हो सकता है, माइक्रो सर्विसेज हो सकती हैं, वो बैकएंड हो सकता है आपकी, वो फ्रंट एंड हो सकता है सॉफ्टवेयर का, मतलब मशीन लर्निंग एक छोटा हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक वेबसाइट पे चैटबॉट लगा हुआ है तो चैटबॉट एक छोटा सा हिस्सा है 10%, बाकी पूरी वेबसाइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे वर्क करेगी, ओके। तो अगर मैं डेटा साइंस की बात करता हूँ स्पेसिफिक, तो स्टैटिस्टिक्स प्लस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दैट्स व्हाट डेटा साइंस इज, ओके। चलिए, आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कौन सी चीज़ क्या होती है, ये तो आप पढ़ी ही हैं, तो नो बिग डील, ओके। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब मार्केट और पैसा कितना मिलेगा। तो एक वेबसाइट है जो एक यूट्यूबर ने बनाई थी, वो वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी आप लोगों को, एनुअल पे स्केल ऑफ डिफरेंट पोजीशंस इन अ कंपनी, सीनियर डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा साइंटिस्ट, सभी की आप ईयरली पे स्केल देख सकते हैं। ये एवरेज अमाउंट है, ओके, जो इंटरनेट पे अभी अवेलेबल है। दैट मीन्स इस वेबसाइट में जो भी डेटा आपको दिख रहा है वो आपको रियल टाइम पर लिंक्डइन का डेटा है, ओके। लिंक्डइन पर कंपनीज मेंशन करती है कि हम लोग ये इस पर्सन को हायर करना चाहते हैं, हम इतना पे देंगे और ये स्किल्स होना चाहिए। इस वेबसाइट पे आपको एक और चीज़ मिलेगी कि टॉप स्किल्स कौन सी है मार्केट में, जिन पर पे जिनको बहुत ज़्यादा मांग रही है कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल पाइथन, एसक्यूएल, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ये सब आपको टॉप पर दिखेंगे मेजरली अलग अलग पोजीशंस के लिए ऑब्वियसली, ठीक है। सो आगे देख सकते हैं, करेक्ट। जितने आप अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे, जितने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे आपने वर्क किया होगा, उससे आपका पैकेज डिसाइड होगा, ओके। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंपनीज ये तो शो तो कर रही है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अलग होने के लिए क्या करना है उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं, पर आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये वेबसाइट पे जा सकते हो, data.nerd ये वेबसाइट का नाम है, लास्ट में रिसोर्सेज में ऐड किया उसे, ओके। सो इस वेबसाइट पे जाओगे और आर्ली रेट भी देख सकते हो अगर आप एक फ्रीलांसर हो, ठीक है। स्टूडेंट हो तो आप ये चीज़ देखो और हर एक पोजीशन पर आपको दिख जाएगा कि कौन सी स्किल्स रियल वर्ल्ड में कोई भी कंपनी मांग रही है, ओके। तो आप उन स्किल्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो या उन स्किल्स पर वर्क कर सकते हो, ओके। चलिए, ये आर्ली रेट है फ्रीलांसर का, सो आप देख सकते हैं कि अगर आप एक डेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन, सो ये एक एवरेज अमाउंट है, ओके। आप हायर भी चार्ज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने स्किल्स है और कितनी ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ओके। चलिए, क्लियर एक चीज़, आइडिया हो गया सिंपल सा, ओके। रोड मैप, तो चलिए हमें समझ में आ गया, ओके, इस फील्ड में हमें वर्क करना है और इस फील्ड में इतनी चीज़ें होती हैं, इनमें से किस पे वर्क करना है वो आपका काम है, ठीक है। आपको हर चीज़ में वर्क करके देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है। हमेशा इंटरेस्ट ही चूज करना चाहिए, पैसा तो आ ही जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको मजा ही नहीं आया काम में तो काम ही नहीं कर पाओगे, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो वापस घूम के बाद में ही आए, ठीक है। तो आप फोकस कीजिए, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जिस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आ रहा हो, आप उसी साइड करिए, ठीक है। चलिए, रोड मैप समझते हैं। रोड मैप में हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक सभी लोग इंजीनियर्स हैं यहाँ पर, प्रोफेशनल्स कितने हैं यहाँ पर, बहुत कम, सभी इंजीनियर्स हैं, मतलब सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, सभी कंगाल है, मतलब कंगाल मतलब नॉलेज से कम कंगाल, पैसे से। चलिए, तो रोड मैप पर फोकस करते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें टेक में, अगर नॉन टेक बैकग्राउंड भी आपका तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे बेस्ट तरीका है। आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, अक्कर वक्कर करके भी कर लोगे चलेगा, ठीक है।
जैसे C सबसे बेस्ट है अगर आप अगर ऑलरेडी कॉलेज में हो तो, ठीक है। अगर कॉलेज से बाहर हो, आप कॉलेज खत्म हो गया है तो पाइथन पर जा सकते हो। बाकी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो C से स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर है, ओके। चलिए, तो पहला जो रोड मैप में पॉइंट है हमारे पास वो है पाइथन, ओके। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, सिर्फ इतनी सी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में आप देखोगे तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ओके। हर कोई बेटर पर्सन को साथ में जोड़ने में हेल्प करेगा या साथ में जोड़ना चाहेगा, ओके। सो पाइथन से आप स्टार्ट कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर स्किप नहीं करें, ओके। क्वेश्चन आता है कि डेटा साइंस में इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, ज़रूरत है कि नहीं तो वो तो छोड़ ही दो, ठीक है, कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स से ही डील करने वाले हैं, और अगर आपको एल्गोरिथम्स के लिए सबसे फंडामेंटल्स ही नहीं आते तो एक इशू है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर प्लस पॉइंट ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपको आता है कि एल्गोरिथम्स कैसे बनते हैं फ्रॉम स्क्रैच, तो आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स या डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को ईजिली समझ पाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर से चलने दो, क्योंकि वो इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, इतना बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है कि आप उस पर बहुत टाइम ज़्यादा लगे, मैक्सिमम 1 मंथ में पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। 1 मंथ मैंने ज़्यादा हो गया, पर हाँ, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, पाइथन, ये फंडामेंटल्स आपने क्लियर करनी है, इसके रोड मैप भी आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगी, लिंक्डइन पर आप सर्च करके मेरा नाम, तो मेरी प्रोफाइल में एक लिंक ऐड करके देखिए मशीन लर्निंग रोड मैप की, करेंटली जिस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, ओके। वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और वहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। गेटअप का भी एक वर्कशॉप मैंने ऐड किया, वहाँ से सीख सकते हैं बिगनर्स के लिए, ओके। तो गेटअप भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस भी कंपनी में आप जाएंगे वो कंपनी टीम के साथ वर्क करेगी, और टीम के साथ जब वर्क करते हैं तो आपको चाहिए कि आप ट्रैक कर सको किसी ने क्या काम किया, ओके। उसके लिए गेट होता है हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो वर्जन कंट्रोल करता है कि कौन सा वर्जन कब लॉन्च करना है, किसमें क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एंड्रॉइड या आईफोन यूज़ करते हैं, तो उसमें अबाउट सेक्शन में आपने लिखा होगा 10.0.1.6 ऐसे करके उसका वर्जन लिखा होता है, ठीक है। मेजर वर्जन, माइनर वर्जन, हर छोटे लाइन के चेंज पर वो वर्जन चेंज होता है, वो काइंड ऑफ मीटर होता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, ठीक है। कि वो मीटर चेंज होगा जब भी आप उसमें लाइन ऑफ कोड बदलेंगे। तो मेजर वर्जन जो होता है, जैसे 10 से एंड्रॉइड 10 से आप 11 पे जाएंगे, ठीक है, तो वो मेजर वर्जन होता है, मतलब कि आपने 1 साल तक कंटिन्यूसली उसमें चेंजेस किए, और 1 साल के बाद जो मेजर चेंज आया ओवरऑल लाइन ऑफ कोड चेंज करने का, तो वो 10 से 11 है। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये वर्जन कंट्रोल एज ए डेवलपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। इवन दो आप अगर एक लीडरशिप पोजीशन भी टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लीडरशिप, वो तो ठीक है, आप एक सॉफ्ट स्किल में आगे हो पाए, लेकिन टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे वीपी और प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं जो आगे पहले से ही फोकस नहीं था उनका कोडिंग में, लेकिन लेटर उनको ज़रूरत पड़ी कि हमको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एक इंजीनियर लेवल पर है तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी किसी भी प्रोडक्ट में, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक बहुत मेजर इशू है, तो आप इसको टालिए मत, क्योंकि आपको इंटीग्रेट ही करना है एंड से, वो चाहे आप आगे चल के करिए या अभी से करते हुए चलिए, ओके। सो आप इसको टालिए मत कि मुझे टेक्निकल समझ में नहीं आता है, मुझे नहीं जाना है, आपको सीखना पड़ेगा आगे चल के, ओके। तो मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ, 3 लोग होंगे, 3 टाइप के लोग जो सक्सेसफुल की चांसेस बहुत ज़्यादा है, उनके लक के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ऐसा बोल सकते हो आप। एक होते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, ओके। तो हम लोग इन्वेस्टर नहीं है, अगेन इनके पास पैसा है, वो पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं, ओके। तो इन्वेस्टर्स। दूसरा होता है जो टेक पीपल है, मतलब टेक में जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जिनको पता है, ठीक है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी भी करंटली वर्किंग है, किस टाइप के सॉफ्टवेयर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इन लोगों को वैसे भी कोई रिप्लेस नहीं करने वाला, मैं आपको पहले ही बता दूं। और थर्ड पार्ट जो आएगा वो होता है एक्सपर्ट्स का, ओके। तो एआई उन चीज़ों को रिप्लेस इजीली करेगा, उन चीज़ों को ऑटोमेट इजीली कर देगा जो एक्सपर्ट लेवल का काम रिक्वायरमेंट नहीं है जिसका। बात समझ में आई, ठीक है। एक्सपर्ट लेवल की रिक्वायरमेंट जहाँ पे नहीं है उसको इजीली रिप्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा कस्टमर सपोर्ट, जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा अमेजोन से या कहीं से भी, और फिर आपको कोई इशू आ गया तो आपने कॉल किया,
मैक्सिमम सारे इश्यूज प्रोडक्ट से रिलेटेड वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं मतलब, ओके? तो वहाँ पे किसी पर्सन को रखने की आप जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों हायर करूँ? ठीक है? तो ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आसान है कोई भी चीज़ यहाँ पर सॉल्व करना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बहुत आसान चीज़ होगी, तो ये ऑटोमेट हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं AI अप्लाई करूँगा, ओके? सो मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, तो उन सबकी जॉब चलेगी, बात समझ में आई? ठीक है? सो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? आपको टैक में रहना है और एक्सपर्टीज को अप्रोच करना है। किसी भी फील्ड में आप जाओ, आपने कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड पकड़ी कि मैं LLM में वर्क करूँगा, तो एक्सपर्ट बनने के लिए ही जा रहे हैं लोग, ओके? अगर नॉर्मल पढ़ना था तो नॉर्मली फिर बात हुई होगी, घूम फिर वो ऑटोमेट हो जाएगी चीज़ आगे में। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए, तो आप ये स्टेप्स ले सकते हैं। मैथमेटिक्स ज़रूरी है, इसको इग्नोर मत करो। जैसे कई जगह पे ज़रूरी नहीं भी है कि आपको मैथ्स इतना ज़्यादा पता नहीं है कि इंटरनली क्या होगा, ठीक है? फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला यहाँ क्यों आया। फॉर एग्जाम्पल आइगन वैल्यूज, आइगन फैक्टर्स पढ़े, ठीक है? आइगन वैल्यूज, आइगन फैक्टर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सुना है, ठीक है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या करेगा? रो को कॉलम में कॉलम को मतलब फ्लिप कर दिया। तो अगर ये मेरा इमेज जो है सामने हमारे, ये एक मैट्रिक्स है, तो मैं इस पर ट्रांसपोज लगाऊंगा तो फ्लिप हो जाएगा इमेज। बात समझ में? इमेज फ्लिप की जरूरत क्यों है मुझे? क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कि मैं फर्स्ट टाइम एक मशीन लर्निंग मॉडल को एक वॉच दिखा रहा हूँ, ओके? तो अगर मैं वॉच ऐसे दिखाऊंगा तो उसको बता दूंगा कि ओके ये वॉच है, वो समझ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको टिल्ट कर दूंगा, इस इमेज को मैं घुमा दूंगा, ऐसे करके बताऊंगा, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो अब ये एग्जांपल्स बनाने के लिए मुझे ऐसे फ्लिप्स चाहिए बहुत सारे, मुझे पिक्सेल्स को शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे कि नए इमेजेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए और मेरे पास डेटा कलेक्ट हो जाए एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, दैट मींस वॉच। बात समझ में? अब इतना ज़्यादा डेटा होगा तो इजीली समझ पाएगा कि क्या होगा, या इजीली समझ पाएगा कि ओके ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर्स होते हैं वॉच के, और उसको हमेशा याद रहेगा कि वॉच क्या होता है। बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए, तो मैथ ज़रूरी है, पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बेस्ट तरीका ये होता है, एक एल्गोरिथम उठाया, उस एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, उसका मैथ क्या है, मैथ क्यों आया इस जगह पर, वहाँ से कौन लेके आया ऐसे कि ये मैथमेटिक कंसेप्ट था जो यहाँ पर जिससे सॉल्व होगी हमारी बिजनेस प्रॉब्लम, ओके? सो इस तरह से आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि और कहाँ कहाँ एग्जाम्पल्स है उसके जहाँ पर ये यूज हो रहा है, ओके? सो मशीन लर्निंग आप इस तरह से पढ़िए पहले, सॉरी मैथमेटिक्स आप इस तरह से पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़ के फिर मशीन लर्निंग करें ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, ओके? क्योंकि मैथमेटिक्स ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, ठीक है? आए हो ना पढ़ के, तो आप एल्गोरिथम पढ़िए पहले, फिर मैथ देखिए उसका, और कोशिश कीजिए अगर आप इंजीनियर्स हैं और कोडिंग में इंटरेस्ट है कि उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप कोडिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में? मतलब सारी एल्गोरिथम स्क्रैच से बिल्ड कीजिए, ओके? ये है चीज़। चलिए, फिर एल्गोरिथम्स हैं, फिर मॉडल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको रोडमैप में मिल जाएगी। मैंने रोडमैप बना के रखा है, इसका कोड आपको मेरे गिटहब पर मिल जाएगा। सारी चीज़ें अभी ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, पर हाँ मोस्टली कंप्लीट हो गया है, जनरेटिव है बचा है सिस्टम, ओके? सो सबका कोड आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वो जाके देख सकते हैं, ओके? चलिए, सिस्टम डिज़ाइन भी इम्पोर्टेंट है। सिस्टम डिज़ाइन आप आगे चल के देखिएगा जब एल्गोरिथम्स आपके हो जाए कि मशीन लर्निंग का एक पूरा सिस्टम बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ओके? क्लियर है? चलिए, फिर आता है कि हमने सीख तो लिया, स्किल हमारे पास आ गई है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या करें, ऐसा क्या करें कि कंपनी हम बोले कि हमको आपको ही लेना है, हमें ज्वाइन कर लो, ऐसा बोलेगा, ठीक है? ये कैसे पॉसिबल है? देखो, कंपनी उनको तभी हायर करेगी जब उनको लगेगा कि तुम्हें लेने में बहुत ज़्यादा वैल्यू है हमारी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने लिंक्डइन पर लिंक्डइन से स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया, तो लेट्स से मेरे अभी 25,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है? 25,000 फॉलोअर्स लेके मैं किसी कंपनी के पास जाऊँगा, मैंने उनको कहूँगा कि मतलब जिस भी फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए गया, ठीक है? लेट्स से उन्होंने हायर कर लिया,
उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास 25,000 का एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। बात समझ में? मैं एक वैल्यू लेके जा रहा हूँ। अगर वो जॉब नहीं करता हूँ, मतलब 25,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो अब कंपनी के पास नहीं रहेगा, इवन तो सीईओ का भी नहीं होगा। बात समझ में? तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप एक ऐसी वैल्यू अपनी बना के जा रहे हो उसके पास कि वो मना तो करेगा ही नहीं। बात समझ में? ठीक है। सो वैल्यू बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। एक तो है प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क या पोर्टफोलियो आपका। प्रूफ ऑफ वर्क की आप तो बोल रहे हो आपको आता है, लेकिन हम कैसे विश्वास करें? आपकी स्किल क्या है उसके लिए मैं क्वेश्चन थोड़ा ना पूछूंगा बार बार। बात समझ में? क्वेश्चन पर आने के लिए, मतलब इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए उनको बताना तो पड़ेगा कि कितना आता है। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ वर्क की यहाँ पर जरूरत है, जो कंपनी भी यही कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, ओके, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, उसको लाइव किया, और फिर कंपनी को बताया कि ओके इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया और ये लाइव भी है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कितने लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं? बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कंपनी किसके पास जाएगी? जिसने उस प्रोजेक्ट को लाइव किया होगा, करेक्ट? लाइव करने वाले बहुत कम लोग होंगे, तो कंपटीशन कम हो गया। अब एक चीज और आती है, लाइव करने के बाद क्या उसके यूज केस लेकर के आएगा आप? कंपनी भी वही कर रही है जो आपने किया। ठीक है, कंपनी क्या करती है? प्रोजेक्ट बनाया, क्लाइंट, अगर सर्विस बेस्ड कंपनी तो प्रोजेक्ट बनाया और क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उसने क्या किया? प्रोडक्ट बनाया और उसको सेल कर दिया। और आप क्या कर रहे हो? आपने प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट की यूज केस लाने के लिए उसको सेल कर दिया, बिल्कुल छोटे से अमाउंट पे या किसी भी तरह से। बात समझ में? तो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसको लाइव लेके जाना है और कोशिश करनी है कि उसका यूज केस भी आप लेकर के आओ। बात समझ में आई? ठीक है, तो जितने स्टेप्स आप आगे लोगे, जैसे एक कंपनी लेती है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे लक के प्लस कंपनी के आपके हार करने के। ओके, बात समझ में आई? तो प्रूफ ऑफ वर्क और पोर्टफोलियो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ओके हमको पोर्टफोलियो बनाना है या प्रूफ ऑफ वर्क के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएं? डेटा साइंस एआई में हम प्रोजेक्ट कैसे बनाएं? अगर हम रेज्यूमे में लिखेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस, तो वो हर कोई लिख के बैठा है, हमको तो दिखेगा ही नहीं वो। बात समझ में? तो एक सिंपल सा स्टेप है किसी भी प्रोजेक्ट आइडिया को ढूंढने का। मेक श्योर कि वो आइडिया क्या होना चाहिए? रियल वर्ल्ड सिनेरियो का होना चाहिए। दैट मीन्स आप जाना कैगल पे जाके आपने फीचर्ड जो डेटा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं, फीचर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? जिनका पैसा मिल गया। ठीक, कंपनीज अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ रखती और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने का आपको पैसा देती, $100,000, ओके, $100,000 या $1 million। देखा ये चीज़ आप लोगों ने? ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो एक वैलिडेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, करेक्ट? वैलिडेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब उसको आप सॉल्व करोगे तो एक प्लस पॉइंट में रहोगे, क्योंकि कंपनी भी वही सॉल्व करेगी। ठीक है, आपने क्या किया? प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाया, उसका डिस्कशन फोरम में गए, कम्युनिटी को देखा और उनके डिस्कशंस में देखा कि और क्या क्या रिसर्च पेपर्स इस पे हुए हो। ठीक, किस किस टाइप के रिसर्च पेपर्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बने। ठीक है, उन रिसर्च पेपर्स को उठाया, थोड़ा बहुत स्टडी किया, समझा और प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रेम किया। ठीक है, यहाँ से जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रेम करोगे वो नया भी होगा, क्योंकि रिसर्च पेपर्स के बारे में किसी को पता नहीं होता, पहली चीज, और नया नहीं हुआ तो आपको कंपनी जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वर्क कर रही है सेम उसी पे आपको भी वर्क करना है, या उससे थोड़ा सा ट्वीक होना चाहिए, पर बात वही होगी। कंपनी आपको तब हायर करेगी जब उनके बेनिफिट का कुछ कर रहे होगा। बात समझ में? जैसे किसी कोई कंपनी मैप्स भी वर्क करे, गूगल मैप्स, ठीक है, और आपने मैप्स से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कंपनी बहुत इंटरेस्टेड होगी कि कैसे बनाया, क्या किया, तुम्हारा एक्सपीरियंस हम यूज कर सकते हैं। बात समझ में? अगर आपके पास गूगल सर्टिफिकेशन है तो उस सर्टिफिकेशन पे कंपनी किसी क्लाइंट को दिखा के प्रोजेक्ट उठाती है। ठीक है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया। बात समझ में? तो आप क्या वैल्यू लेकर जा रहे हो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए वो कंपनी, उसको आपको भी करना है, या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को करना है। उस लेवल पे नहीं करना क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इतनी रिसोर्सेज और टीम नहीं ला सकते, बट अपने लेवल से जितना हो सकता है वो हम करें। बात समझ में? पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट्स। ओके, क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है किसी का?
नहीं? चलिए जॉब प्रोजेक्ट बनाओगे, जॉब का पोर्टफोलियो बनाओगे, उसमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना, क्योंकि अभी सोशल रिवॉल्यूशन चल रहा है। ओके, इसके पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, जिसमें अपने जो पेरेंट्स थे वो लोग क्या करते थे, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, अब कपड़ा चाहिए, ये सब हमको दे दिया पेरेंट्स। अब आप इसके आगे का सोचते हैं, बात समझ में आई? ये तो सबके पास ही है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हमारे पास घर भी है, हमारे पास कपड़े भी हैं, ठीक है। तभी सोशल रिवॉल्यूशन है, ठीक है। सोशल रिवॉल्यूशन में क्या चलता है? कंटेंट चलता है, ठीक है। आपको जितनी चीजें आती हैं, अगर आप उसके अंदर अराउंड कंटेंट बनाओगे तो उससे रिलेटेड लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। जो लिंक्डइन पे कंटेंट डाला है उससे अराउंड 20 मिलियन रीच है उसकी, 20 मिलियन, ठीक है। तो 20 मिलियन की रीच, उससे 25,000 फॉलोअर्स। इससे होता ही है कि एक तो आप एक एक्सपर्ट की तरह दिखते हो मार्केट में किसी भी क्लाइंट को, क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, आप हैंडल नहीं कर पाओगे इतने आएंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, जिस भी चीज़ का आप वर्क कर रहे हो ना, आप उस पर कंटेंट बनाओ। वो एक फॉर्मेट में हो सकता है, आपके लाइव प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में, आप किसी को सिखा रहे हो कि वो कैसे होगा, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, मेक श्योर वो यूज और कॉम्प्लेक्स डेटा को इंक्लूड करता हो, नॉर्मल डेटा नहीं, ठीक है, जैसे टाइटनिक डेटा सेट, वो सीखने के लिए अच्छा है पर रियल वर्ल्ड के लिए नहीं है, ओके। फिर हमारे पास है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स दैट मीन्स आपको ब्लॉग्स लिखने, बात समझ में, आपको कंटेंट क्रिएट करना है। आप कंटेंट क्रिएट करोगे तो लोग, आपको लगता है कि वो अच्छा नहीं है कंटेंट, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और के लिए वो बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है, ठीक है। मुझे भी लगता है कई बार, रेगुलरली ब्लॉग्स या कंटेंट कोई भी लिखता हूँ लिंक्डइन पर, तो मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है, पर कोई और पर्सन उसकी तारीफ कर देता है जिसके लिए वो बहुत वैल्यूएबल है, बात समझ में, ठीक है। सो आप क्या करो, ब्लॉग्स लिखना जरूरी है, गिटहब रिपोज बनाना जरूरी है। मेरी गिटहब प्रोफाइल किसी ने देखी है यहाँ पे? एनीवन? मेरे गिटहब प्रोफाइल में मुझे बैंगलोर से 40 LPA का ऑफर मिला, ठीक है। हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको, पर आगे समझना, आप अगर अपना काम मार्केट में रखोगे तो उसको देख के लोग आपके पास आएंगे, बात समझ में। पर्सनल ब्रांड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दो वो छोटा सा ही, ठीक है। 10,000 फॉलोअर्स होना भी बहुत बड़ी बात है एक स्टूडेंट की, ठीक है। आपको मिलवा सकता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी ब्रांड है ऐसा, ओके। सो वो बिल्ड करना ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा किसी भी कंपनी के लिए, ओके। सो गिटहब आप प्रोफाइल बना लो, क्योंकि डेवलपमेंट कोड तो आप लिखने ही वाले हो वैसे भी। डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, रिसर्च पेपर आप लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको आइडिया बताया कि आप कैगल पे जाके प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वैलिडेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ो और उसके अराउंड जितने रिसर्च पेपर है उनको रिसर्च करके आप अपना खुद का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रेम करो, बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। अगर आप रिसर्च साइड जाना चाहते हो और नहीं भी जाना चाहते हो तो आपका जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको थोड़ा रिसर्च एंगल देके थीसिस लिख दो, तो आपका रिसर्च पेपर भी काम हो जाएगा, प्लस आप उसको लाइव कर रहे हो तो प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, ओके। और नेक्स्ट चीज होती है कि आप उस प्रोजेक्ट की यूज केस लेकर के आओ। यूज केस मतलब कि आपने उस प्रोजेक्ट को बेच दिया किसी ने, या उस प्रोडक्ट के लिए कोई कस्टमर्स लेकर के आए, क्योंकि कंपनी भी यही कर रही है और कंपनी भी आपसे यही चाहेगी कि आपको इतनी चीजें आती हैं, तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है उनके लिए, बात समझ में। तो आपने अपने क्राफ्ट पे काम किया और आप उसको शेयर भी करिए लोगों के साथ, ठीक है। जितना आता है ना 100% शेयर करो, 100%। ऐसा मत सोचो कि ये सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। पता चलने दो, आएंगे लोग, क्लाइंट भी आएंगे, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। सो आप पैरेलली अपने पर्सनल ब्रांड पे भी ध्यान दे सकते हैं, कीवर्ड्स को देखते हुए, ओके। क्लियर पॉइंट। यूज केसेस तक जाना है, कॉलेज के लैपटॉप तक नहीं रखना प्रोजेक्ट को लाइव करना है डिप्लॉयमेंट के बाद, और उसके बाद यूजर्स भी लेकर के आना है उस पर, बात समझ में आए। एक भी यूजर चलेगा, ठीक है, एक फ्रेशर के लिए बहुत बड़ी बात, ठीक है। चलिए, पर्सनल ब्रांड प्रोफाइल, जो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप चेक कर सकते हो, ओके। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो लिंक्डइन से अच्छा कोई भी नहीं, ठीक है। लिंक्डइन पे आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं, दैट मींस वो इंस्टाग्राम के 1 लाख के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइंट मिलेंगे वो लाखों के होते हैं, क्लाइंट करोड़ों के भी होते हैं कभी, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है। सो लिंक्डइन से आप स्टार्ट कर सकते हो, छोटे पोस्ट लिखिए, जिन भी प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हैं अपना थॉट उस पर लिख सकते हैं, ठीक है।
दैट्स इट, लिंक्डइन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट जो हमारा रह गया है, दैट इज 100 डेज AI सर्विस। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने का सबसे सही तरीका ये है, इसके 4 रूल्स हैं। इस रूल्स में आपको कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं बताना, ये आपके लिए, ठीक है? आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको एक स्टार्ट और एक पुश देना है, बूस्ट देना है खुद को, तो आप इस चैलेंज से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? इस चैलेंज के ये 4 बेसिक रूल हैं, ठीक है? फर्स्ट इज डीप वर्क। डीप वर्क का यहाँ मतलब है आपको डीप वर्क हमेशा हेल्प करेगा लाइफ में। आपको एक चीज हमेशा साथ में रखनी है, दैट इज लर्निंग, ठीक है? तो आपके फर्स्ट डे के 4 घंटे, फॉर एग्जाम्पल हर दिन के 4 घंटे आपको निकालना। उस 4 घंटे में आप लोगों को फोन यूज नहीं करना, आप कॉफी चाय पी सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, लेकिन किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करना, आपको अपना काम करना, ठीक है? लैपटॉप ओपन करो, काम चालू कर दो। वो 4 घंटे कंसंट्रेशन से जो आप काम करोगे बिना फोन के, वो आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट्स देगा थोड़े टाइम। बात समझ में? तो ये पहला रूल है इसका कि आपको दिन के एटलीस्ट ऐसे 4 घंटे जिसमें आप किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करें, ठीक है? सो ये डीप वर्क जो है, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो, आपको इस पर बुक भी मिल जाएगी और बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है? जो भी आप 4 घंटे में डीप वर्क सेशंस में करोगे वो आप क्या कर रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मार्केट में रख रहे हो, ब्लॉग्स फॉर्मेट में, वीडियोस फॉर्मेट में, या लिंक्डइन पोस्ट फॉर्मेट में, या किसी भी तरह से, ओके? सो सेकंड पॉइंट, सेकंड रूल क्या है, आपको मार्केट में रखना है जो भी आप सीख रहे हो, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली आपको हेल्प करने वाला है, ओके? थर्ड आपका है कि आपको रिसर्च करना है थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड, ओके? अगर आप कंपनी साइड जाना चाहते हो, फ्रीलांसिंग साइड जाना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप किसी मतलब जॉब चाहते हो तो आपको कंपनी पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो कंपनी कौन से प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही है। बात समझ में? ठीक है? आपके प्रॉब्लम्स ही उससे रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपनी वर्क कर रही है टैक्स डेटा पर, तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी टैक्स डेटा पर होने चाहिए। तो जितनी भी कंपनीज हैं जो टैक्स डेटा पर वर्क कर रही हैं, आप लोग भी उसी के अराउंड अपना रेज्यूमे बनाइए। बात समझ में? तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे किसी भी कंपनी में जाने के, रादर देन आपने रैंडम प्रोजेक्ट्स बना के रखेंगे। ठीक है? रैंडम प्रोजेक्ट्स तो कहीं भी नहीं चल रहा, मतलब कहीं पर भी एंट्री नहीं मिली। ओके? जितना स्पेसिफिक होगा एज अ फ्रेशर उतना अच्छा। डाइवर्सिफाई आप बाद में कीजिएगा, ठीक है? कि आप आपको ये भी आता है, आपको वो भी आता है। ओके? और लास्ट पॉइंट है कि आप एक बार में एक प्रोजेक्ट पे वर्क कीजिए, 10 जगह अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? आप एक बार में एक ही प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे, तो किसी भी एक प्रॉब्लम को एक बार में सॉल्व करेंगे। बात समझ में? ठीक है? चलिए, ये कुछ रिसोर्सेज हैं, आपको मेरी प्रोफाइल पे भी मिल जाएंगे, डेटा प्रोफाइल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है? सभी टाइप के रोड मैप्स अवेलेबल हैं, ठीक है? और बाकी सारे प्लेटफॉर्म में मेजरली मैं लिंक्डइन पर ही एक्टिव रहता हूँ, ठीक है? आप भी किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चूज कीजिएगा, ठीक है? हर चीज़ में एक ही चीज़ चूज करना है, जितना आप डाइवर्सिफाई अभी से करेंगे उतना दिक्कत है, ठीक है? सो आप लिंक्डइन से शुरू कर सकते हैं और ये रिसोर्सेज आप देख सकते हैं, ओके? अगर आपको ये चैलेंज वाला रूल्स चाहिए तो मैं वो शेयर कर दूँगा, वो भी आपको प्रोफाइल पर मिल जाएगा, ओके? और लास्ट में एक न्यूज़लेटर है एआई से रिलेटेड, तो आप चाहें तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके? सो दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मीन को सीरियसली ले लेगा। Thank you, sir, and please give a huge round of applause for him. So, anybody who has any question, you can catch up with him. He'll be outside or here. So just maybe ping him on LinkedIn or just have a one-on-one connect with him right now. Okay? Adding to it, I started my own machine learning journey, and I was influenced by him. So thank you, sir. And I would ask Kushal sir for presenting mementos, token of appreciation. Let's have a huge round of applause, guys. So moving forward, we have our next speaker all the way from Ahmedabad.
Ahmedabad. So presenting Mr. Karthik Garasri, who is a full stack developer and also will be here following on the topic building advanced Gen AI solutions using Google Cloud. So let's have a huge round of applause, guys. Okay, hello, everybody. Hello, can I see a wave? Hello? Hello. Hello? Yeah. Are people sleeping over there? Hello? Okay. How was the lunch? Good? I need to see a thumbs up. Good? Okay. So don't sleep now. I know the lunch has always been good here. But since we are almost at the end of the event, I have my last talk today because it has been advanced talk. So the prerequisite was to know a bit on GenAI, what it is, and what are the key terminologies. But we'll see what you can do as an advanced solution, building an advanced solution using GenAI, and how you can productionize it, and how you can work with different customers in different verticals on their use cases. So talking about me, I am Karthik. I am here in Indore for the first time for the DevFest here. And what I do, I basically work with a number of Google Cloud enterprise customers based out of US. I help them in their Google Cloud journey, be it application development, data engineering, machine learning, and now GenAI. And I do have a couple of recognitions by Google, which is Google Developer Expert for Google Cloud and Google Cloud Champion Innovator. And in the last talk, as the speaker mentioned, that good to have some certifications and good to have some different badges. So I do have 6 Google Cloud certifications. There are almost like 10 certifications by Google Cloud. I have 6 of them, and these are on different levels, level 1, level 2, and then the professional ones. This is one of the picture from my trip to US. This is from Google Cloud Next. Google Cloud Next was a conference where we all heard a lot of GenAI offerings and solutions and announcements first by Sundar and then by TK and then a couple of engineers. And GenAI announcements were made at Cloud Next in San Francisco. And since then, I have been working with diverse set of customers across healthcare, finance, BFSI, and a couple of other sectors. We are helping them understand and discover what could be some of the use cases in their industry and how we can solve them using GenAI and the basic ML participate. Before moving forward, just want to run a quick check. How many of you are students? Okay. First year? Second year? Third year? And fourth year? Okay. How many of you are professionals? Okay. How many of you work on web? Okay. Mobile? Data engineering? Okay. Machine learning? Okay. How many of you have worked on cloud? Okay. How many of you worked on Google Cloud? Okay. Firebase? Okay. How many of you have deployed a single project on Google Cloud or Firebase? Okay. Yes. Cool. Alright, so we have a little bit of diverse set of audience. I'll try to keep the conversations a bit generic for everybody to understand. We are not going too much into generative AI now because there have been a couple of sessions by everybody today, and I'm sure you might have learned about Gen AI, the fundamentals, but just a quick recap that today if you see we are in the AI-driven revolution. Everybody's trying to integrate AI in their use cases, in their workflows, and earlier we have had neural networks,
maybe they were launched in 2012, and we have been using neural networks for most of our, let's say, RNN, CNN. So generative AI is not new. We have been generating content, but that was using RNN, CNN. But now, since Google launched the transformer architecture, I'll talk a little bit on that. Yeah, but before that, ideally in AI there have been two different directions, two different classifications. One is predictive AI, second is generative AI. So whenever you want to predict something, that goes into predictive AI, which is like the MLOG stuff. So let's say my past revenue is 10 rupees, today it is 11 rupees, what will be my next year's revenue? So this is a predictive AI, where you are predicting some numbers, where you are doing some predictions. But then there is generative AI, where you are generating something. And when you say generate something, it could be image, text, audio, video, etc. Now, generative AI has been driving a couple of new opportunities. Why? Because it is cheaper to use, faster to develop, and it has been serving a couple of use cases which have been operationally expensive but easier to solve using GenAI. We'll figure out what these are. Right now you might not know the cost of these, but some of these things are very crucial, and we'll see. And Google Cloud is something that we'll be discussing today. If you have questions around GPT and other stuff, feel free to catch up after the session. Today we'll be talking about Google Cloud and why, what are the offerings by Google Cloud. And why Google? Because Google has been an AI company since its inception. Google released the Transformer architecture way back in 2017. What is it? So earlier, if you see, for all the generative stuff, you would use GANs and RNN and CNN, which were comparatively slower than the Transformer architecture. This Transformer architecture is more like a framework, which is more like a formula using which you can do faster multiprocessing and create use this to create content. Now GPT, Lambda, BERT, PaLM, all of these have been coming in across these years, and all of these are based on the Transformer architecture. So quite technical, but what are LLMs? I'm sure you know right now, so I'll skip this part and I don't want to bore you now. But what LLMs can do, it can do content summarization, content generation, code generation, it can do reasoning, so it can also understand your questions, it can do reasoning, why you should buy which product, XYZ stuff. It can do basic arithmetical calculations as well. So if you would give some financial data and you would ask, calculate some XYZ stuff out of this, it can do basic, but not like a full regression model. Then it can do a little bit of translation as well. It has been a bit good on that part, and it can distinguish cause, and it can also showcase the effects. We'll see how these things will fit into industry use cases. Okay, so how many of you have used ChatGPT, Google Bard? Quick show of hands. Okay, now whatever that you have used, these are consumer products, and these are nothing but these have been trained on a huge corpus of data, which is like this data. What this data has been, this has been text, images, speech, structured data, 3D signals, and XYZ stuff. And after training all of this data, this has been known as a foundation model. What foundation models are? So these are like the base LLMs that you are talking to. So Chat Python, Code Python, GPT-3, and all that stuff. What we'll focus today is the adoption layer. What it means that we will, so ideally for all of your industry use cases, let's say I am a company which has my own data, or let's say, if you are in your college and if you have your own data, you have got your own timetable and XYZ stuff.
Now, if you want to build like a chat GPT or Google Bard for your own data, and if you want to simply ask, when is my next lecture, and when are my next exams, and what assignment do I need to submit. So this is something where you have your own data, where you want to use the GPT or the Palm 2 capabilities, and do stuff using that. So that is something which is called adaptation, and it can be tuned to do certain amount of tasks. It could be question answering, it could be sentimental analysis, it could be information exercise. We'll discuss more on the use cases, skipping these slides now because it's basic. I know you might have learned today. Again, this is a bit detailed explanation of task adapting. So in task adapting, it has like prompt engineering techniques, it has tuning techniques. We have our data over here which is being passed to this layer. There are a couple of prompt engineering techniques as well, which are called as single shot, multi shot, zero shot, that stuff. There is something called chain of thoughts where instead of giving let's say a long prompt, you would do it like step by step. You would figure out what is the process happening, how the LLM should think, and you can do like a chain of prompts. So these are bit technical stuff. If you have questions, we can take it offline, but we'll go to the use cases. Now coming on Gen AI products on Google Cloud. The Bard and Makers product that you have been using. So the thing is that it is a consumer product and it's a free product. So when it's a free product, you are the product. So since you have not been paid, so they have been using all of your prompts, all of your data back to retrain their, the model which runs behind Bard and ChatGPT, and your data has been compromised. Okay. So for your personal use cases, it is okay, right? So let's say when I wanted to come to Indore, I asked, what are good things to look around in Indore, and what good places to visit, and what food to eat, and all that stuff, right? This is very generic, okay to ask. I don't have any private information being shared over this. I'm okay with that. But when it is about industry, when it is about an industry use case, there it always comes with a private information, confidential data, internal documents, internal stuff, and they don't want to expose their data, and they don't want the model gets treated with their own data. So that is where Vertex AI comes into the picture. And Google has this couple of products where the foundation models, if you see the conversation AI and enterprise search, these are the core Gen AI products where your data is not being retrained, your data is not being used to retrain the model. So all of your data is only consumed by a frozen model in your own cloud tenant. All these terms are very tech heavy, but it is like you are using a frozen model of Google Bard Brain, and it is sitting somewhere inside your own room, and your data is also inside your own room, and your data is not going out of the room. So this has been the basic fundamental ask by enterprises for enterprises, and this is like a core requirement. Then they have some out-of-the-box products called Doc AI, Healthcare AI. You won't go into that today. Apart from that, some customers are like, I don't want to use it. I don't want to rely on other companies and on a vendor. I want to use open source model like Llama or something like that, and host it on cloud. So that is where they have like Vertex AI has got this model garden where you can deploy open source model, any open source model on Google Cloud and use it. There have been companies, and when you think about enterprises, there have been government regulations and a lot of regulations and stuff where there have been concerns that my data should not go outside India. So let's say it's like a bank or something like that. They have some restrictions on
data storage and policy and etc. stuff. So that is where they use this capability where they host open source model on Google Cloud. DOA is something that you might have heard today a couple of times from Roman and a couple of other folks as well. So DOA is on everything around developer productivity. So we're writing code, generating unit test cases, improving your Google Cloud consumption, or understanding what's going wrong in in your login. So all of these capabilities are in DOA. The pricing is still being thought through. It is not in GA yet. It is not in general availability. Until it is not in GA, you can use it for free until it is in free. Now, let's see what is like GenAI for enterprises. Now, 96%, according to one of the surveys conducted by Google Cloud team, 96% of the CXOs have recognized that using generative AI is not really a choice now, it is more of their need. The reason is that it has been accepted and adopted widely, and there have been multiple use cases being explored and being implemented by a lot of enterprises, and they are always in awe that what if my competitor release XYZ product using GenAI and you would be left behind. So there's this FOMO happening right now, and that is where everybody is exploring what we can do with GenAI. And in last 6 months, I have been working with all these industries for GenAI. So if you take healthcare, if you take retail, BFSI, insurance, automobile, or it could be CPG customers, and the big tech as well. Everybody has been exploring what we could do and how we could do. And that is where we will discuss some of the use cases. So let's say if we talk about customer service or maybe corporate finance, okay, let me give you an example of a e-commerce company. So there's an e-commerce company in the US, and they have like a huge number of products. They have in-person stores as well, and they have e-commerce stuff as well. And they have been repacking, and they have their own set of huge products. And we had a workshop, and I was taking the workshop, discovery workshop, and we were figuring out from each of the big, so we had all the VPs from HR, finance, this, and they're figuring how we can improve, this company's performance. Now, after a 2-day workshop, we figured out a couple of use cases, starting from product description. So one of the things is that, when you have a huge amount of products, they have a huge team who would create a beautiful description and content for their website. And it was not really uniform because people come in, people go out, and everybody has got different thoughts, and they're having a huge number of products. So sometimes they don't refresh the content, there will be issues with that. And this would also help in their SEO stuff, and let's say if they want to navigate, let's say if it's Diwali and they want to navigate some of the products in the Diwali sale and things like that, they have had some issues with that. So one of the use cases was streamlining the product description generation, and that is where you upload the picture, you give the basic details that this is the date and this is the product and these are the ingredients and this and that and XYZ. So the LLM would generate let's say 300 word product description for their use case. Now let's say you have the product, you have listed your product, but sometimes the pictures are not really good. So one of the use cases was see how we can have a pipeline where we just give a standard amount of just a standard picture and make it beautiful according to their brand guidelines. And brand guidelines would be their set of colors. So if you might have noticed for Google, there have been 3-4 colors: red, blue, yellow, and XYZ.
and they have their own set of colors, and they want to create and streamline the process of automating the creatives for their products. Okay, so now product is there. Now they have the product description. Now they have the product pricing, the product image. Okay. Now the products have now the products are on the website, but the issue is with discovering these products. So when a user would come to the website, their search algorithm was not good, right? It was not very efficient because they have a huge set of products, and trust me, when I was in US, I'm a vegetarian, and it was very difficult for me to find some veg snacks and things like that. So I would have to figure out, I would have to check 50 different packs and see what is the ingredients and XYZ. So there was this need that there have been people who would like to, let's say, have gluten-free high protein snacks and gluten-free high protein chips. So this is an AI use case where the product description, so we would create embeddings for the product description, and then you would do a search on top of it. So out of 50,000 products, if you would ask high protein, low fat, XYZ chips, it would give you 5 chips, right? So this was the first and foremost basic use case. Second was they have a lot of so since they are in retail as well, and most of their customers would come for groceries, and they have veggies and everything listed. So they have had this use case LLMs are good at recipe generation, right? So their use case is we want UI on the screen on their e-commerce app where you can simply say I want to make pasta tonight. Okay. So if I would do it manually, I would have to search for the recipe, I would have to check for the ingredients, then go to the market, search for those ingredients, mix and match and then purchase those ingredients. But here they wanted to have a full integration. Well, let's say if somebody says I want to make pasta tonight, so the LLM would come through the recipe would come through the LLM. They would ask what all ingredients are required for this recipe. Then they correlate these ingredients to their product catalog, and it is like a select star and add to cart. Right? So now if you see for the business, for the enterprise, this was a very critical point where their revenue has been impacted. Right? The product discovery and recommendation is the biggest use case for any e-commerce or any retail customer. So okay, now they have sold the products and the products are looking good. Now here if you see there's a concept in marketing called upsell. So instead of just selling few XYZ items, they are selling like a huge combo and selling all the items for pasta. Now they also have a partnership with a liquor store. So they would say, here, people are having good wines with pasta, and if here are some good wines with your pasta, and good to have it on your with your dinner. So you can also not only upsell, but you can also cross-sell between different categories. Okay, now the product has been sold, the person have had his pasta and his wine, and they are happy. And now they are trying to add reviews on the platform. Okay. So whenever you talk to a product manager, they have always been, concerned on, what next to do, and what features requests should be taken, what is good and what is bad in the products. Now with reviews, the product executives use case was let's say once they've sold the product, we have, let's say, 10,000 reviews on our platform. But we don't know what are the good things, what are the bad things, what should we improve in the product, what is already good in the product, what is bad in the product. So we have a huge pipeline which will ingest all the reviews, and then it would summarize the review in 30 words,
And then because people are very different, right? You know, it's not always a positive or a negative review. Sometimes there are also sarcastic reviews. Let's say somebody purchased a MacBook and if that doesn't boot up, they would say this laptop is so good that it did boot, right? So it's not a positive review, it's not a negative review, and this is more like a sarcastic review. So using this LLM tech, using summarization, product managers and people are trying to understand what things should be improved in the product. We should improve the packaging or whatever that we need to improve. Now the products have been sold and the business is going on, but now they also want to increase the revenue, right? Because they spent money to build this tech. So now they want to create a pipeline or more of a content assistant which would help their social media team create create Instagram posts, Twitter posts, all the social media posts, and also target users according to their needs. So for example, if I'm a vegetarian and they know that I like XYZ stuff, then it would be good to send me a notification or an email according to my preference, right? Because then the conversion ratio would be higher. Let's say when you use the same use case in an insurance company, if I am a high salaried person and if I do not have a car, then there is a high probability that I might get a car loan and purchase a car. So there have been different use cases where we can do personalized content generation for for your users, and you can increase the the ratio of selling your products. They also create a huge magazine, like the magazine size is like 40 pages, and they would create a huge magazine with a couple of interviews and all of that stuff. Like these are physical magazines, like newspaper, and they would publish these magazines across US, and people would purchase these magazines and use just for recipes and all the cool stuff. Let's say they have some facts that when was microwave invented, some random stuff. So that is also something that they are trying to automate, because there has been a huge team who would write all the content and all the creative stuff and designing all the creative stuff, and even after having that magazine, you cannot search on that magazine. So that has been an issue. So yeah, I mean, these are some of the use cases, but when you think about generative AI, it is not only a chat interface. It is not only Google Bard, or it is not only ChatGPT. And there are number of use cases across different industries where you can use GenAI. One of the healthcare use cases that we are solving is it's one of the biggest healthcare company in the world, and they generate a lot of drugs. So every time you create a new drug, you need to go through a couple of processes. You have to go through FDA approvals and things like that. So that is where your actual research and scientist teams would spend a lot of time on creating these reports and documents. And for this company, we have implemented a mechanism where it automates some of the document generation part, because there are specific definitions in the document. So there are different categories. So there will be like summary and heading 1, heading 2, heading 3. This section should have this information and things like that. So once you feed the primary data, it would create content for the document, and then whenever the number of people who would be writing that document have decreased, and instead of spending time writing these documents, they are spending more time on actually doing the drug research and creating more drugs.
So this is one of the example for healthcare, for operational efficiency, where you are trying to improve the productivity of your teams and improve the efficiency. And there are a number of use cases. I mean, we could spend a lot of time, we could spend a day, and there are a number of use cases. But this is how you should think about on the generative AI factor. It's not only a chat interface; it's quite more than that. Yeah. Okay. Now questions on how we can do this, because all of this data would be private, and how we should be concerned on sharing this data, and this is where things are. So it's not only the LLM model that is going to work for your solution. There are couple of things around the LLM model. Let's say there is something called prompt engineering, context management, which model to choose. You need to tune your model. Then you need to have like a CI/CD. Then you need to have like different data storage, data security stuff. Then for all of your needs, you also need to have a couple of APIs for interaction. You need to have API security. You need to store your secrets, and there's a whole lot of stuff. So it's not only just like simply using like Google Bard or ChatGPT and simply doing prompt engineering. There's like a whole lot of stuff revolving around the LLM model. And along with this, with any solution in cloud, you need to have all the security measures as well. So it includes auditing, logging, monitoring. So let's say how many users are using your product, and how is it performing in production. So everything on cloud that is needed, that is also something that you need to think about on a GenAI solution. Oh, and this is like a huge tree. What is it? This is like a GenAI decision tree, where there are different questions using which you can choose what model you should choose. So since there are a number of products on generative AI, there might be different use cases. Sorry, there might be different cases where not the core GenAI stuff, but there are different out-of-the-box solutions which can simply solve your use case. So I'm not sure if you can see this, but probably you can refer it when I'll probably share the slide there. And okay, so when it comes to prompts, basic quick check on prompt engineering. So there are different mechanisms called zero shot, single shot, and multi-shot, few shot. What these are? Let's say if you simply ask what are good places to visit in Indore. This is a simple question, one-line question where you are simply asking the question. So this is a zero shot prompt where you are not giving any example. Let's say if I would say what are some good places to visit in Mumbai, then I would myself answer the question in the prompt that you should answer the question in this way, that these are XYZ places to visit in Mumbai, and this is how the answer should look like. Do you need it as a JSON? Do you need it as a array? Do you need it in a very lengthy way, or whatever way? So here you are giving an example, and then you are asking what are good places to visit in Indore. This is single shot. And when you have different use cases, so let's say the reviews, right? The reviews that we discussed. So this is where you can give different examples that, let's say if it's a positive review, tag it as a positive. If it's a negative review, tag it as negative. If it's a sarcastic review, tag it as a sarcastic. If it's like a very angry review or something like that, have different tags. So when you have different set of examples, you can pass different label data in your prompt, and that is something called as few shot prompts. And going a bit into depth, but this is how you can implement using LangChain. So let's say when you have a lot of text, you can create embeddings out of it, out of your text, and then you can search on top of your embeddings to get like a Google search experience. How it works? So basically, embeddings are nothing but a vector representation of any word, any text,
what are embeddings and how these are helpful. They have semantic meaning. They have some understanding. So let's say if you say New Delhi to India is Tokyo to Japan, it understands that this is there is some relationship between these two words, and these are the capitals of this country. And how you can use this? So let's say if you see these are some of the news articles in this area inside dictionary. Now each article is represented in this format after using or creating the embeddings. And using this embeddings, you can store it inside a vector database. Vector database could be Neo4j, it could be Vertex, matching engine, it could be any vector database. And then using this vector database, you can search. Let's say whenever you would give a search, let's say give me all articles related to supply chain, it will do a semantic search on top of your vectors, on top of your embeddings, and give the output. So might be a little difficult to understand right now, but as in when you would try to experiment and write some code, this is going to be very helpful. And to all the folks who are concerned about the data and architecture and how things would look like on Google Cloud. So if you here see, Google Cloud is centrally hosting the model, the large language model, which is in a frozen state right now. Then inside your Google Cloud tenant, your Google Cloud tenant is your Google Cloud project. Inside your Google Cloud project, you have your own data, you have your own set of rules, you have your inference, and you have been using this as a layer for adoption. And then you have your mobile app or your API, and all your users interacting with your APIs through your Google Cloud tenant. So this is how an enterprise architecture would look like. If you want to learn more about generative AI, here's the link. Here is something where everything is updated on Google's Gen AI offerings. And and let's say once you start coding, this is the link where there are a number of examples using which you can use LangChain, you can use text Python, code Python, or the number of models that you want to use, and there are a couple of examples as where you can see how things are being implemented and try to replicate something. Okay, last 2 seconds. Okay. So after having a huge long day, hearing from everybody about cloud and Gen AI and everything around this, there has been this question somewhere in your mind that how you can learn more about Google Cloud, and that is where Google Cloud has its certifications. So if you see, Google Cloud Digital Leader is the level 0 certification. Then you have Associate Cloud Engineer, which is the level 1 certification. And then there are different professional certifications according to your role. So if you are like a data engineer, or if you are a machine learning engineer, or a network engineer who is interested in your stuff, you should offer a professional certificate. Once you complete the foundational and associate one. I do have 6 of them. So in case if you have any questions, then feel free to catch up and or do ping me. Can help you with any exam vouchers, or maybe helping with your preparations or anything around that. And thank you. Thanks for tuning in and having me here today. Very thankful to the GDG team and everybody. Thank you so much, Karthik. So guys, if anybody has any questions, any queries, okay, he has some. What's the name of that healthcare AI? Sorry? Healthcare AI you refer. Yeah, so there's a product called Healthcare AI. Healthcare AI. Yeah. And there are a couple of products inside that category as well, so good to take a look. Anyone else? So if anybody has any questions going forward, they can connect with Karthik. He will be here. And we are going to wrap up the event after this, but please connect with him on any platform. I think this is your social media link, right? Yeah. So
So do scan this and connect with them. So thank you so much, Karthik. As a token of appreciation, we would like to invite Priya. And Akhil. Let's have a round of applause, please. So we are done. So guys, कैसा था event? So can you feel this robo dancing like really? अभी तुम्हारे दिमाग में भी यही चल रहा होगा. Like we started with AI, we started with Gen AI. We had a session by Himanshu on how to master AI, and then we jumped off to advanced AI. So how are you guys feeling? Processing है? हाँ ना कुछ तो बोलो कि हो गया. We just had 2 sessions, guys. That too by such amazing speakers, right? So let's have a cheer. Okay. So on the count of 1, 2, 3, we'll shout GDG Indore, right? Last part, thoda sa kar do, please. Okay. So on the count of 3, 1, 2, 3, GDG Indore. Again. 1, 2, 3, GDG Indore. थोड़ा ठंडा हो गया है माहौल, मुझे ऐसा लग रहा है, right? लाइक कैसा लगेगा सब खाना पचा रहे हैं सो गए हैं. Okay, so I was outside and somebody said कि machine learning में crowd तो बहुत अच्छा है. I said yeah, crowd तो बहुत अच्छा है, but बहुत ठंडा है. Is it so? No. Did you feel the thund from Indore to this room? Yeah. ठंड आ गई है. कोई बात नहीं, ठंड आ चुकी है, but let's not make it suitable for Pickle the Penguin. Now guys, another announcement again. Cybersecurity Scholarship Study Jam. अगर हम भूल गए हो तो मैं याद दिला देती हूँ. Please scan this code and do register because you will get free credits and a good certification. Okay, and they have really good courses over there. So do scan it, enroll it, and if you haven't got it, we will share it with you. Cool? Yes. Thank you so much. Should I give you 2 minutes to scan this? Okay guys, so we are here having our selfie session. So please fill the seats in front and come forward. So that. Selfie session से पहले it's time for feedback. Oh yeah. So हम आगे आ रहे हैं for the selfie, but do scan this. Give us a feedback. What you liked about the event, what went wrong, or if anything that you would want us to know, please write on it, and we would love to hear about it. Okay? Like we'll hold the slide for a minute or two. So everybody, please come forward. Let's take a group selfie. Okay. We'll capture this moment. So कितने लोगों का first DevFest था ये? Wow. So moment capture करना तो बनता है. Come on stage. आजा. आजा आजा. Come on, yeah. Come on. सब लोग. So whosoever is willing to capture this moment with us, please come. आ जाओ सेट हो जाइए
थोड़ा सेट हो जाए फिर मैं सेंटर कर दूँ। इतना तो सोशल मीडिया सब यूज करते हैं कि अपने आप अरेंज हो जाएंगे। Just get to your best of angles और जिधर से भी आप visible हो। आगे बैठ जाते हैं। अरे मैं भी आ रहा हूँ। जाओ ना। बंद कर। लाइव बंद कर दो। लाइव वहाँ से बंद हो गया। थोड़ा सा और पीछे हो जाओ ना भैया अरे भैया Free to use. आप आ जाइए तुम फोटो